उदय वाली। हौसला छोड़ो ना, हौसला दे दो ना, हौसला जाना है दूर तुझे। हौसला छोड़ो ना, हौसला दे दो ना, हौसला जाना है दूर तुझे। सतरंगी समा है हाथ रंगी फिजा है क्यों है ना, बोलो ना। सतरंगी समा है हाथ रंगी फिजा है क्यों है ना, बोलो ना। हौसला छोड़ो ना, हौसला दे दो ना, हौसला जाना है दूर तुझे। हौसला छोड़ो ना, हौसला दे दो ना, हौसला जाना है दूर तुझे। सतरंगी समा है हाथ रंगी फिजा है क्यों है ना। Team leaders, just ensure that everyone is joined from your team. सतरंगी समा है हाथ रंगी फिजा है क्यों है ना। मेंटर्स को कब बुलाना है? मेंटर्स को भी बुला लो, ज्वाइन करवा दो। हमरा ही है, हमरा ही है, हमरा जी है। हमरा ही है, हमरा ही है, हमरा जी है। So Dad, will you walk the parade with me? Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप सभी का शानदार स्वागत है। जो छुप के बैठे हैं उनका भी स्वागत है, जो छुप के नहीं बैठे हैं उनका भी स्वागत है। तो सभी से नम्र निवेदन है कि अपने वीडियोस फटाफट ऑन कर ले। राइट, जो हमसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कंटेक्स्ट में दूंगा राइट बिफोर दे ज्वाइन इन। बट आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो यूट्यूब से भी कनेक्टेड हैं, आप सभी को भी हेलो यार। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो फटाफट हाय लिख दो चैट बॉक्स में। यस 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 यस, क्या बात है सर, क्या चल रहा है आज पूछ रहे हैं लोग मुझे। ठीक है, ग्रेट, सब पता चल जाएगा। एक बहुत यूनिक कंसेप्ट पे हमने काम किया आज तक। यार हम लोग पागल हो गए हैं ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बट ठीक है, पागल होना भी जरूरी है अगर सक्सेस अचीव करना है लाइफ में। तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट अपने वीडियोस ऑन कर लें। टीम लीडर से रिक्वेस्ट है अपने टीम को मैक्सिमम काउंट इंश्योर करें। दोस्त भाइयों को बुलाइए और आपके टीम मेंटर्स को भी आप रिक्वेस्ट करिए कि वो ज्वाइन हो जाए। आई थिंक आई कैन सी लॉट ऑफ मेंटर्स हैव आल्सो ज्वाइन इन।
सर ये क्या चल रहा है? इंद्रजीत हेलो, हेलो हेलो बाकी सभी को, आशुतोष, सूरज, यस यस यस। तो जो भी आखिरी तक आज सेशन में रुकेगा उसके लिए स्पेशल सरप्राइज, स्पेशल टेक अवेज, राइट। सो सबसे पहले हमारे जोर साथ से जो, पूछ जय माता की। अच्छा जोर से बोले, अच्छा। मेरा आवाज सभी तक पहुंच रहा है? आई थिंक जूम में मेरा आवाज सभी तक पहुंच रहा है तो यस लिख दो यार चैट बॉक्स में। और यूट्यूब पे भी पहुंच रहा है तो एक बार यस लिख दो, हेलो 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 हेलो। यस, मेरे को तो जोश देख के काफी मजा आ रहा है। आई कैन फील द जोश। यस, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं देख रहा हूँ कि कुछ टीम वाले थोड़े से किसान विसान बन के आए हैं, है ना। तो मुझे काफी सही लग रहा है ये देख के। हाउ इज द जोश? जोश हाय हाय सर। सर। यस सुपर यस यस। हाई, सुपर हाई। सुपर हाय हाय हाय। कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, भाई बता दो अब क्या हो रहा है, एकदम फोमो क्रिएट कर दिया है तुमने। राइट, तो जो हमारे साथ अभी पहली बार कनेक्टेड है, जिन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है, राइट, तो आज हमने सभी ने, कितने लोगों ने, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा है अभी तक के, मतलब कुछ तो सुना होगा। देखा है सर बहुत। सीए वाला पोस्ट तो देखा ही होगा यार। जिन जिन ने देखा है यस लिख दो यार चैट बॉक्स में। जिन जिन ने देखा है यार यस लिख दो, जिन्होंने नहीं देखा है वो नो लिख दो चैट बॉक्स में। सर जिनने नहीं देखा होगा सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी उन्हें। अरे नहीं। सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, आप टेंशन मत लो। जिन जिन ने शादी हो देखा, जाएगी। जिन जिन ने देखा है वो प्लीज यस लिख दो चैट बॉक्स में। जिन जिन ने नहीं देखा वो नो लिख दो चैट बॉक्स में प्लीज। सर शादी हो जाएगी उनकी। अरे शादी हो जाएगी मतलब क्या भाई? शार्क टैंक देखने से किसकी शादी? ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ये अरुण से मैं पर्सनली बात करूंगा, बेचारे को काफी सारे एडवाइसेस चाहिए। वैसे मैं नहीं दे पाऊंगा बट ठीक है, कोई मेंटर से कनेक्ट जरूर करवाऊंगा तुम्हें। राइट, नेहा कह रहे हैं कि सर हमने देखा है, आशुतोष कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि सर हमने देखा है। ओके, क्या चल रहा है? ये सीए बॉन्ग का शार्क टैंक चल रहा है, राइट। सो थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ मैं सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले कि क्या हो रहा है। तो जिनका भी माइक म्यूट पे नहीं है प्लीज म्यूट पे चले जाओ ताकि ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से आवाज पहुंच पाए। आई कैन सी मोर देन 150 पीपल आर वाचिंग दिस, तो काफी अच्छा लग रहा है। सो जो यूट्यूब से कनेक्टेड है आप फटाफट लाइक प्रेस कर दो, शर्माओ मत यार। और जूम वाले तो आप चैट बॉक्स का पूरा प्रयोग करो, है ना। तो वो चीज है। नाउ हमने अभी क्या किया था, सो हमारा लास्ट 2 बैचेस कंप्लीट हुई थी गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप की, जहां पे हम स्टूडेंट्स को एंड टू एंड ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे इंटरव्यू में प्रिपेयर करना एंड मॉक इंटरव्यूज कैसे प्रिपेयर करना एंड हाउ यू कैन गेट क्लोजर टू योर ड्रीम कंपनीज आउट। सो हमारी 2 बैचेस थी जहां पे अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 250 प्लस स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। तो सबसे पहले यार इन सभी के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां तो बनती है, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये भरोसा दिखाया कि सर रिजल्ट्स के पहले वो बैचेस कंप्लीट की, तो मुझे काफी अच्छा लगा। सो उन बैचेस को हमने 4 टीम्स में डिवाइड कर दिया था एंड हर एक टीम्स को काफी सारे टास्क, काफी सारी एक्टिविटीज दी थी। आज का टास्क है सीए मॉन्ग टैंक, जहां पे इन्हें अपने बिजनेस आइडियाज के लिए पिच करना है। तो हर एक टीम ने अपने अपने मेंटर्स लेके आए हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है, वो अपने बिजनेस आइडियाज पिच करेंगे। आप भी जनता लाइक के साथ साथ उन्हें सपोर्ट करते जाइए और आपको फाइनली डिसाइड करना है कि किसका बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा है, राइट। तो वो एक चीज है। और उसके साथ साथ जैसे हर एक टीम्स अपने आइडियाज पिच करेगी, वो अपने मेंटर्स के सामने, और जितने भी मेंटर्स हैं यहाँ पे उनके सामने अपने आइडियाज पिच करेंगी। और हर एक टीम को एक स्कोर कार्ड दिया हुआ है जो मैं अभी दिखाऊंगा आप सभी को। हर एक टीम का एक स्कोर कार्ड है। वो स्कोर कार्ड के बेसिस पे वो मेंटर्स को, या जो भी शार्क्स रहेंगे या सीए मॉन्ग टैंक्स रहेंगे, राइट, तो उन्हें वो बोलेगी कि मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए, आप मुझे मेरे आइडियाज पे इतने पॉइंट्स इन्वेस्ट करो, राइट। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम पैसा मांग ले, बट ठीक है हम जरूर मांग सकते हैं, पॉइंट्स इन्वेस्ट करो। और जो भी टीम्स के सबसे ज्यादा पॉइंट रहेंगे उस टीम को हम स्पेशल गिव अवेज देने वाले हैं। तो ये है एक ओवरऑल कंटेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं अभी। इसके साथ साथ बाय द एंड ऑफ दिस वी आर आल्सो गोना बी हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन। तो हर एक टीम के 2 बेस्ट प्लेयर्स आए हैं जो कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और जो हमारे मेंटर है वो उनको बताएंगे कि कैसे उन्होंने डिस्कशन करना चाहिए और कैसे उसे इम्प्रोवाइज करना चाहिए। तो आई होप सभी को क्लियर है कि हम क्या करने वाले हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस यार सबसे पूछ लेता हूँ कैसा जोश है, हाउ इज द जोश? लिख दो यार चैट बॉक्स में। हाँ हाय कैसा, हाय सर। सर, हाय सर, हाय 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 हाय। हाय कैसा सर। कैसा ऊपर जोश है? बताओ 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 चैट ऊपर से बॉक्स। भी ऊपर। ऊपर ऊपर चिद्रुप आज एकदम सुपर एक्साइटेड है। मेरे को तो लग रहा है टीम 3 वाले ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं आज, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, हाँ सर जो किंजल लगता आ है रही उससे है उल्टा आज ही टीम होता थ्री है। जीतेगी। अच्छा अच्छा, चलो ग्रेट। सो सबसे पहले मैं, हम टीम वाइज जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं 2-3 लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लिए, राइट। तो
सबसे पहले यार मैं चिराग को राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहूंगा यार, बेचारा दिन रात मेहनत किया इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। चिराग भाई जहां कहीं भी हो मंडप पे आने का कष्ट करें, शर्माए नहीं चिराग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो ग्रेट। चिराग आपको कुछ कहना है? नहीं सर, मतलब तो आपके गाइडेंस के साथ ही ये हो पाया पूरा, और हमारी टीम इंचार्ज के साथ। राइट, मतलब आप नहीं होते तो शायद हो ही नहीं पाता ये। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब ये चीज था कि यार ये कुछ यूनिक चीजें पे काम करना है। उसके साथ साथ मैं सभी टीम इंचार्ज को जोरदार तालियां के साथ उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा यार, काफी एफर्ट्स लिया है बेचारों ने। मैंने उनका जीना हराम कर दिया था 4-5 दिनों से, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम इंचार्ज। टीम 1 के टीम इंचार्ज कहाँ है भाई? छुप के बैठे हैं। थैंक यू सर। कहाँ हो भाई? यस। टीम 2 के टीम इंचार्ज आई थिंक हर्षिता। टीम 2 के हर्षिता जहां कहीं भी हो। म्यूट 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 पे हो, म्यूट पे हो। जनता आपको देख नहीं पा रही है। आ गए। टीम 3 के इंचार्ज आई थिंक मेघना। यस सर। टीम 4 निमेश। यस सर। ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया यार, आपने काफी एफर्ट्स लिया। हम सभी का सपना, एक सीए कम्युनिटी ये सोचती है कि यार हम क्यों पीछे रहे, और आपने इसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो यार राउंड ऑफ अप्लॉज आप सभी को। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं हमारे टीम लीडर्स के पास, बट टीम लीडर्स के पास जाने से पहले मैं हर एक टीम लीडर्स को एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने भी काफी एफर्ट्स दिया यार। आपके लिए भी जोरदार तालियां तो बननी चाहिए टीम लीडर्स और उनकी पूरी टीम्स के लिए, बिकॉज अरे वाह, ये बात किसी ने माइक अनम्यूट करके ताली बजाई, मुझे काफी अच्छा लगा। यस, तो टीम लीडर्स के लिए भी बहुत एफर्ट्स लिए, उनके लिए भी ढेर सारी तालियां। अब आते हैं टीम 1 से। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ टीम 1 अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा बताएं, और बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कल के वोटिंग के लिए भी, और ये हेल्प करेगा आपके मेंटर्स को भी, और जो भी यहाँ पे ऑडियंस कनेक्टेड है तो उनके लिए भी हेल्प आउट करेगा। जिन्हें नहीं पता वो कौन सी टीम से है, हाँ जिन्हें नहीं पता वो कौन से टीम से है, तो आप ये लोग जो टीम लीडर्स पिच करेंगे उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपकी कौन सी टीम में जाना है। तो टीम 1 से आई थिंक टीम लीडर जो भी है वो सामने आए, राइट, और अपनी टीम के बारे में बताए और अपनी टीम के जो भी मेंटर्स हैं उनके बारे में बताए, सो दैट हम सभी को सब एक दूसरे को जान पाए। यस, टीम 1 से कौन आ रहा है? विष्णु और किंजल। यस किंजल, यस विष्णु। Yeah. So for our mentor today, we have got CA Lijil Lakshman. He's a passionate speaker, and he's specializing in the domain of indirect taxation and startup consultancy. He's also a past SICASA secretary of the Chennai SIRC region, and he's also a AIR 1 of Certified Associate of Indian Institute of Banking, having secured All India first rank in the finance and accounting. And I have been knowing him since the past 4 years, and I'm very grateful for you to come today and my pleasure. Hello everyone. Great. अरे सर के लिए जोरदार तालियां तो बनती है, सर के घर तक तालियों की आवाज पहुंचा दो यार। All of that. Thank you so much for having me here. Great. Very excited to see what's going to happen. हेलो, हाँ भास्कर को राइट, ओके। सो आई वांट यार टीम 1 आप अपना छोटा सा एक पिच बता दो कि जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं पहली बार, उन्हें नहीं पता कि कौन सी टीम में जाना है, तो व्हाट इज अ वन रीजन व्हिच शुड ब्रिंग देम टू अ टीम 1? टीम 1 से कौन इंट्रोड्यूस करेगा? So team today, Vishnu and Kinjal are the captains of team 1. Our team name is Abracadabra. Our pitch is basically not giving spoilers much. Our pitch is going to be based on an edtech startup going in that direction, whereby we help students and anyone who's going to make decision of their careers make a better and informed decision. Today on the panel, while presenting the pitch, there will be the team leaders Vishnu and me, and helping us out would be our colleagues Minky and Divyansh. So I would like you all to come and support our team and our pitch, because I believe in my team and the efforts which we put throughout the 4 days, brainstorming the idea, cancelling out each and every idea, and thinking to the minutest detail to come up with an idea which would be viable and scalable. Thank you. So if you're thinking of a team, always think of Abracadabra. ओहो, ग्रेट, चलो बढ़िया है, ग्रेट यार, गुड टू सी। टीम 1 के लिए जोरदार तालियां। अब जाते हैं टीम 2 की तरफ। टीम 2 से जो भी टीम लीडर्स हैं और टीम मेंटर्स हैं उन्हें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। टीम 2। Sir, Harshita here, from team in charge of team 2.
Yes, yes. Hello, Yes, Ashika. am I Please, audible? Yes, yes, yes. Please go on. Please Am go on. So team 2, we are having Chetan Bhatt sir as our mentor, whom we can call as Chetan Bhaiya. He is a recently qualified chartered accountant and a big audit senior, having worked in various audit domains of big firms like Lodha, KPMG. Shit, my connection is unstable. Sir, am I audible? Yes, yes, yes. You're audible. Please go on. Please go on. Having worked at Lodha and Company BDO, and he's presently associated with KPMG as an audit senior thereby. So for our pitching idea, I would say like Chetan sir has given a completely different edge to our pitching idea and has helped in improvising it to a great extent. No, please go on. Yeah. And he has given us implementable solutions with tangible benefits for our idea. Now coming to our team is popularly called as Char Din Mein Connection Double, hence called Team 2. And the most popular thing about our team is that the team efforts we are putting together, and it is not being run on a one-man army notion. Like we all are working together, or specific tasks assigned to each one of our team members. The best thing about this team is I can call any one of the team members, including the team leaders, at any time, and they're always ready to ki haan ho jayega. No tension, sab ho jayega. So this is the best thing about our team. And as far as investing in our pitch is concerned, I would say we are coming up with a really unique idea in order to boost the India's GDP growth rate. So it will help the farmers and ultimately the consumers in the long run. So whenever you are, in order to help out India from being a developing to a developed country, I would request you all to please come in and support our team in this regard. Thank you. That's all from my end. Great. Great यार. Please give a big round of applause for CA. क्या बात है. अरे तुम मेरे डायलॉग चोरी कर रहे हो. Thank you guys. Thank you. Yes. Great यार. Great Chetan. Good to see you connecting with CA Monk. Yes. Same here. Shivam. Yeah. चलो great यार. We'll move to team 3. Team 3 से जो भी team leaders हैं, they can introduce themselves and their team mentors. Good evening. I'm Komal from Team 3, and the name of our team is the Son of Pitches. And I believe, like, for winning any game, the most important thing is a pitch. A proper pitch is the most important thing. But I also believe what is more important with a pitch is your players. And I think the most valuable asset of any team is their own players. So I believe that my team, and together with the pitch that we have today, are surely going to be the ones that bring to you the best of it. And we value our team members more than what we value our together whom we are. So that's what I feel, that the team members are the ones who constitute the strength. And that is why we've named our team the Son of the Pitches, who rule what the pitch is. And not giving much of the spoilers of our pitch, I would like Jinal to introduce our mentor further. Jinal, you're there? I think so she's having connectivity issues. So I would really like to introduce our mentor. Our mentor is CA Shivam Haloka, and he is very passionate about finance and technology. He started his professional journey as an article in ENY, and he's gained experience in auditing and assurance. As well as he's secured an AIR rank in the CS executive exams, and currently he's being associated with BDO in forensic audit. Please welcome him, and with a round of applause. Thank you. Great. Hi, Shivam. Thanks. Hi, Shivam. Same pitch. Huh? Yes. Great, yaar. Great. Good to see you joining in to this platform, yaar. I am too happy to see my name going so up and in social media. Right. Good going, Shivam. Thanks. Chalo, great, yaar. Yes. We'll move to team 4. Team 4 say I want anyone to please introduce. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Anjali. I, along with Amit, leading the team 4, which is named as Oh Bhai Maro Mujhe Maro. Our team is very unique and creative, which can be seen from our name. Actually, our name has some significance that Shivam Palan sir used this dialogue every time. So, and we love him.
So we just used his name because we are unique. So you can see the idea which our team will be presenting in future. So idea you can connect, everybody can connect it with easily, and you'll surely gonna, it's very unique, and it will solve a massive problem which is going on in our society. Now Amit will introduce our mentor. Okay, so I would like to welcome our mentor, Vinay Kamal Sharma. He is a CEO and co-founder of Example Pro Learnings. He has 13 years of experience in education industry, also being associated with JK Shah classes. He also have 4 years of experience of startup ecosystem. He is also a great mentor, guide, and a friend who is always ready to interact with our team members. So I would like to request all of you to give a very good round of applause for Vinay Kamal Sharma. Great, great. Welcome, Vinay sir, to this platform. Thank you so much, Shivam sir. It's really nice to be here, and I'm feeling so honored because, like being a part of the ecosystem, I'm seeing that CA students are also participating in such type of ecosystem, and I'm really happy that besides their like corporate job, they are also thinking out of the box as well. Because normally होता है कि सीए को ये माना जाता है, as you have already seen in the Shark Tank also, कि सीए से दूर रहने का अगर ऐसा कुछ है. So we are just here to show them up that yes, CA can do much bigger than what they think basically. That's all, and all the very best to each and every person and each team. Let's hope that the best person will win. Thank you so much. ग्रेट सो यार एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, अपने माइक अनम्यूट करके जोरदार तालियों से सभी मेंटर्स का हम लोग स्वागत करते हैं यार। Great. Thanks a lot. Chalo, great. I like this voices coming in between. So great. So before we start, mentors के लिए छोटा सा guide के किस तरीके से judging parameter होगा and how the entire scoring system is also going to go. राइट तो मैं पहले से थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, जो पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें मैं स्कोर कार्ड पे दिखा देता हूँ, एंड आई वांट मेंटर्स टू जस्ट नोट डाउन द स्कोर्स ऑफ देयर टीम्स एंड अदर टीम्स एज वेल. सो मेंटर्स का ये रोल है कि आपको अपनी टीम्स को जिताना है, दैट इज द वन थिंग. सो हर एक मेंटर्स को आई थिंक सभी को पता है कि कौन कौन सी टीम को इंचार्ज है, राइट. तो मैंने हमारा एक गूगल शीट बना हुआ है स्कोर कार्ड का, वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. अगर मेरा स्कोर कार्ड दिख रहा है तो इफ कैन एनीवन राइट यस इन अ चैट बॉक्स, इफ इट विल बी ग्रेट. Can you like speak in English? Yes, sure. Right. So every team has their own scorecard, which we have maintained from day one itself. So we have mentioned the names of our team leaders, team mentors, and the team in charge which are there. I'll directly come to the end part, which is this, right? So total score for a team 1 is 1020. I want mentors to just note down the scores. So that is again going to be helping you to for a further investing and pitching part. Team 2 has a score of 1545, काफी ज्यादा स्कोर है, बट ठीक है, क्या पता, अगेन इट्स अ गेम चेंजर. टीम 3 इज अ लीडिंग टीम 1660 स्कोर्स के साथ, एंड टीम 4 का स्कोर है 995. सो ईच टीम हैज देयर स्कोर. आई वांट मेंटर्स टू जस्ट नोट इट डाउन. So now I'll just brief about the game कि किस तरीके से गेम होगा. So game is going in such a way that कि every team is gonna be coming with their business ideas. हर एक टीम अपने business ideas के साथ आएगी. वो उन्हें 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा. They are gonna be given a 5 minutes of time. They are gonna be pitching their ideas out. Now after that is done, every mentors they are gonna be pitching for a points, right? Which is again very very important. जैसे शार्क टैंक में हम पैसा मांगते हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट्स मांगने हैं, ठीक है. नाउ से फॉर एग्जांपल टीम 1 से कोई आ रहा है, राइट, टीम 1 से कोई आ रहा है, तो जो भी टीम 1 से आ रहा है उनके मेंटर्स, उन्हें पॉइंट्स, उनके लिए आप पिच नहीं कर सकते हो बिकॉज वो आपके मेंटर्स हैं. आपको पिच करना है टीम 2, टीम 3 और टीम 4 के मेंटर्स को, राइट. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो समवन इज कमिंग फ्रॉम अ टीम 1, दे आर गोना बी पिचिंग अ मेंटर्स फॉर अ टीम 2, टीम 3 एंड टीम 4. नाउ एवरी मेंटर हैज अ चॉइस एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनको 2 टीम्स में करना है. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दे आर गोना बी इन्वेस्टिंग इज पॉइंट्स 100. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट्स दे कैन इन्वेस्ट इज 1000. ओके, मैक्सिमम पॉइंट कितने, 1000, मिनिमम पॉइंट्स 100. मिनिमम 2 टीम्स में जो भी हमारे मेंटर्स हैं उन्हें इन्वेस्ट करना है. अब कितना इन्वेस्ट करना है वो उनके ऊपर है. अब इन्वेस्टमेंट का ये फायदा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स अगेन जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके बेसिस पे हम कल हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोल क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन आइडियाज विच यू हैव शेयर्ड, और वो आइडियाज के बेसिस पे जिस पोल पे सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे वो पोल्स में अगर उस टीम ने इन्वेस्ट किया है या उस मेंटर्स ने इन्वेस्ट किया है उनके पॉइंट्स डबल हो जाएंगे.
दैट मीन्स दैट टीम इज गोना बी विनिंग, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी. सो फिर से मैं बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि एवरी मेंटर इज गोना बी, एवरी जो भी प्रेजेंटर है वो प्रेजेंट करेगा पॉइंट्स के लिए. आप बोलोगे कि मुझे इतने पॉइंट्स दो, राइट. मैक्सिमम आप 1000 मांग सकते हो, मिनिमम 100, राइट. सो दैट इज दैट. एवरी मेंटर हैज टू इन्वेस्ट इन मिनिमम 2 टीम्स, राइट. सो अगर आप पिच कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम अ टीम 1, यू विल बी पिचिंग अ मेंटर ऑफ टीम 2, टीम 3 एंड टीम 4. एवरी टीम इज गोना बी गिवन अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स. आफ्टर दैट इज डन, मेंटर्स को अपने स्कोर कार्ड पता है कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो मेंटर्स उसके बेसिस पे पॉइंट्स बांटेंगे, ठीक है. जैसे ही वो पॉइंट्स बांटेंगे, तो दे हैव अ चॉइस कि अगर आपका मान लो जो भी पोलिंग आया उसके बेसिस पे जो भी टीम का सबसे ज्यादा पोल आया उनके पॉइंट्स डबल हो जाएंगे, बट उतने पॉइंट्स उनको उस टीम को देना पड़ेगा, दूसरी टीम को, मीनवाइल, ठीक है. तो इट्स लाइक इन्वेस्टिंग ऑन समथिंग वेयर यू गोना बी गेटिंग अ रिटर्न, ठीक है. तो आई थिंक थोड़े से डाउट्स है, आई थिंक. Yeah, so my doubt is that should we invest right after the pitch or like after we hear all the pitch? Because like, it could be a chronology issue that, the first pitch comes in and we need to know the rest of the pitches, right? Right. So we'll try to ensure that कि ये चीज ना हो, और इस वजह से हम कोशिश ये करेंगे एंड में ही सब एक दूसरे लोग, मतलब एंड में we'll try to invest for everyone so that it's gonna be fair for the person those who's coming at the last, ठीक है. बट द टीम कैन आस्क, मतलब जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो बोल सकते हैं कि सर आप मुझे इतने पॉइंट्स दो, ठीक है. सो दैट इज गोना बी देयर. आई थिंक विनय सर हैज आल्सो टॉक्ड. Yeah. I just want to ask, like, in totality, we have only 1,000 points, which we need to distribute among all the like 3 participants. No, so total points you have which I have just shown you on the screen, right? Matlab, I think you are from No. team 4, right? Yeah, no. What I'm asking, like team 4 score is 995. Right. So are we going to like distribute these like 995 score among all the 3, or we have separate thousands points? No. You are gonna be distributing the 995. Now you need to decide ki whether I should invest entire 995 or should I invest only 200 points, because 200 is the minimum. You are supposed to invest in minimum 2 teams. Okay. And second, my second question is, are we supposed to ask some questions regarding the idea, like or not? Yes, you can ask them some questions out. Okay, perfect. Right. But will not extend too much. Matlab, we'll try to keep it for 10 to 15 minutes out. So that so I'll request कि जो भी present कर रहे हैं, please keep eye on the times, because session काफी बड़ा नहीं कर सकते. But yes, let's start it out. तो I hope यार, I think किसी को और कोई doubts है regarding any mentors have any doubts regarding this? Chetan and I think Shivam, any doubt? No, that would be all. Okay, I have the same doubt of. Perfectly all right. Yeah. Great. Yeah. So great यार. अब हमेशा confusion तो यही होता है कि कौन सी टीम पहले जाएगी और कौन सी टीम बाद में, right? And I always believe in कि जनता जनार्दन होती है, right? जनता के ऊपर तो कोई होता नहीं है, ठीक है. So what we'll do is कि जो YouTube से कनेक्टेड है, right? YouTube से जो भी कनेक्टेड है उनसे हम लोग पूछते हैं कि कौन सी टीम आप चाहते हैं पहले जाए. टीम 1, 2, 3, 4 जो भी पहले नंबर आएगा वो टीम सबसे पहले जाएगी, राइट. तो देखते हैं यूट्यूब से कौन सी टीम. ओके, गोपाल ने कह दिया है टीम 3. ओके, गोपाल लग रहे हैं टीम 1 के, बट उन्होंने फंसा दिया टीम 3 को. सो टीम 3 को जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं. टीम 3 वालों को जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं. सो आई वांट यार, टीम 3 से कौन आ रहा है प्रेजेंट करने के लिए, एक बार जस्ट मुझे बता दो. मुझे ये भी बता दो कि आपको स्क्रीन विन प्रेजेंट करना है तो आई विल मेक यू को होस्ट. ओ भाई साहब, सब टीम 3 लिख रहे हैं क्या? Okay. Yeah, sir. We will need okay. For yeah. Okay. So I have Pranshul and Unnati presenting from my team, and sir, I will need the screen sharing. I've given you the screen sharing, right? Okay, sir. Yes. Yeah. Okay. 1 second. So great यार. टीम 3 सबसे पहले आ रही है, तो देखते हैं टीम 3 क्या जलवा दिखाती है. Yeah. Just a second. Yes. So can we raise our hand so we can be in the front? Yeah. आप हैंड रेस कर लीजिए. Yeah. So just give me a second. So I'll just start. Yeah. Great. All the best सभी टीम 3 वालों को यार. सब चैट बॉक्स पे ऑल द बेस्ट लिख दो यार टीम 3 वालों को. मोटिवेट करो यार अपनी टीम को. बाकी लोग भी लिख सकते हैं. Yeah. Is my screen visible? Unnati? Yes. And yeah. All the best, guys. Wait a second. Yeah. Okay. Now, first of all, yeah, just a second. Yeah, just a second. I'll just start with screen sharing. Yeah, Unnati. Let's start, Pranshul.
I'll also start the timer, right? So that it's gonna be there. मैं जैसे ही time up हो जाएगा मैं time up बोल दूंगा so that you can stop. Yes, All please right. start. So, hi monks, I am Pranshul. I'm Unnati. And we represent the team 3. And we have come here with an idea that solves a real up and coming problem. We're asking for all the points you have to invest in our idea. So, imagine you're cruising down the freshly built highway between Gurgaon and Jaipur. The day is sunny, the roads are smooth, and the songs are exciting. Suddenly, you realize that a fuel tank has emptied beyond the reserve. Fortunately, there's a petrol pump nearby. You somehow manage to reach there, pump some fuel, and you're on your way again. Close call, right? Now imagine your car does not have a combustion engine. Instead, you are an electric vehicle and there's no EV charging point nearby. So, presenting our idea, the matrix, is actually based on the problem raised by Pranshul. We are actually introducing an aggregator model in the EV charging market, which we can see highly developed, deployed by Ola, Zomato, and name as many as name we can mention. We will provide EV charging stations to households, restaurants, hotels, dhabas, and other establishments at a subsidized rate. We call all of the establishments mentioned above as our chargers. The chargers will then be a part of our EV charging network spread across whole India. What's in it for them then? Well, the chargers will be entitled to the charging fees obtained from the customers. We will just take a 30% cut from them. This model would not block our capital, unnecessary capital expenditure, and we would have enough capital to invest in further development. The chargers themselves will fund their EV stations. Let's take a deep dive in our concept by addressing all the concerns one by one. First of the problem is, or the major problem I would say, is the non-availability of charging options for EVs. The government has even taken a lot of steps to establish EV stations in tier 1 cities, but what about the rest of our country? What about the rest of India? Over 7.5 lakh electric vehicles have been registered since 2012, but only 1,028 EV charging stations are yet available in our country. So there are a lot of opportunities out here. More and more companies are trying to build the infrastructure for charging EV batteries, but none of them are doing how we like to propose it. So you might ask, why Matrix and how are we going to do it? Simple. We will tie up with EV charging station manufacturers like Blink, Volta, EVgo, Trontec, and we will provide the EV stations to our chargers through 2 different modes: direct purchase or leasing out. On the backend side of our operations, we'll have a well-equipped and dedicated tech team, which will enable us to provide our service via an app. Basically, anyone who wants to charge their EVs will come to our app, register themselves, and then search for the nearest EV charging point. What is our USP? Because a lot of people are already doing this. Well, our competitors are infusing their own capital to build networks across the country, which is a very demanding and expensive way to approach it. Without subsequent funding, they might also come to a point where they don't have enough capital left to expand their network, and things will come to a halt. Through our aggregator model, we are incentivizing our chargers to invest their own capital so that we are not blocking our funds for expanding the network. Now, you may ask why the chargers will invest their own hard-earned money. Simple. We're offering them passive income at a minimal maintenance. Coming on to our revenue model, our tariff would be fixed on the basis of units of electricity consumed by the customers while charging their electric vehicles. Customers can also opt for a subscription fee for a bundle of charges, let's say 5-time charge, 10-time charges, or 15-time charges. From our charges, we'll take a 30% cut or commission of whatever billing has been done to the end customers, and we will remit the residual to them. We will also provide additional operation services to our big customers like malls, parking lots, etc., because we can expect on an average 500 cars or something like that to use this facility each day at a mall. And that's going to be a hassle for them to keep the operations running afloat, and that's where we come in. We will keep the operations running for them. And for this, we will charge a monthly maintenance fees, which will also depend on the size of the mall. If we are talking about a lot of things. So now we'll talk about our competitors. Definitely, there are a lot of competitors in this market as it is growing way too fast in the recent times. The first competitor is the Ola Electric Mobility.
which is already mentioned that it is rolling out its hypercharge points at selective locations in our country. We can also say that Ather Energy is also following the same model. But what we are approaching is what they are approaching is a capital intensive structure where it requires a lot of huge amount of investment. We are doing the human intensive structure. We are going for a lot of human but less capital. So, moving Monks, on, we would like at the to last, talk more we about want- this topic, but due to dearth of time, we're asking you to invest in our idea. And so, Monks, who wants to invest in our idea, the Matrix? Great, So basically, we had a little bit technical glitch. So I would just like you to go through our presentation. So like a lot of internet issues happened. So I would just like you to just go through our presentation. So like what our company basically addresses is the aggregating model of where the EV chargers are growing. And that's what I feel and our team feels that is going to be the future with electronic vehicles coming in. And it's also being perspective for the consumers as well as the companies providing with it. So because for the consumers, they might get it at a subsidized rates and wherever possible, like they can just log in into our app and they can get an EV charging section next to themselves straight out of it. And the companies providing electricity will also be providing with a lot of benefits, provided with a lot of benefits from the EV chargers, that is from the Matrix. And that's how we help to solve this problem, like how we have our affiliate partners with the Blink, the Volta, and the few that you name, the huge EV charging platforms. Great, great, great. So great, yaar. Round of applause for the team, yaar. काफी अच्छा presentation दिया, right? I want mentors to come in and they can ask their doubts or anything. Yes. So yeah, team 1, team 2, team 4 mentors. You can, if any doubts, anything you want to ask them, you can ask them. So I have few questions, and first of all, a great idea. Like considering you guys are looking at addressing a market which is for clean energy and solving it socially. So very good thought at the right point. But I have few questions on your revenue model and how you're going to be sustainably going to build it. Right. First question would be that, see, I'm going to look at a very easy perspective of how your revenue is going to work. Suppose, okay, right now we are not in a market wherein we have a lot of electric vehicles out there. So first of all, I wanted to understand how much would be the capital investment for this one charging point. Like you have a lot of charging points available right now. Considering that, in my my thought process, I think there is a huge gap in terms of how the revenues are going to be generated. Say, all these electric vehicle companies are definitely pushing towards people to charge at their houses. First of all, one reason, it takes a longer time to charge. So for a car to be on full charge or a bike to be on full charge on a normal perspective would be a lot of time. So only reason why I should be opting this is that the home charging is really taking a larger period of my time. But then when you look at how much amount is that I will be willing to pay to you, okay, would be a very competitive rate considering a lot of that is coming for the market. So around 15 per unit could be the rate that is, I think, is in the market right now. But definitely these charging points will come with an electricity cost. So considering you margin out with 10-15%, okay, and considering you're looking at the commercial entities and everything, and you will hardly have 4 to 5 parking areas, and you cannot definitely give the parking areas all of them for charging, right? So you're running business, so hardly you allocate 2 of your parking lots. And considering you have 2 to 3 people coming on right now, because we don't have so much of electric vehicles, say 2 to 3 people coming on a daily basis, still you're looking at say one vehicle. Generally, if you're looking at the current range and full charge, it could be somebody could be paying around 200 to 300 rupees. So you're looking at 300 into 5,500 into probably 2 charging stations there. That is 3,000 per day. Looking at a revenue model of, like, say 10-15% margin that you're looking at, how are you going to make it first
profitable for your partners that you're saying that capital investment is not going to happen? Second, how are you going to get that profit? You're going to get again 10% of that. So how do you see that the whole, profitable model would work for you? This is my first question. I think I have a follow-up question once you answer on this. Right. So, like you mentioned, the range of current EV in current generation EVs is approximately 150 or let's say 160 kilometers, right? We can establish that. So what we're trying to do is provide last minute, connectivity to these vehicles if they run out of juice. So what is happening right now is a lot of these vehicles are only being used for intra-city travels because of the restricted range. What if the person wants to take their vehicles out station and then they're having a bad time looking for a charging station because there are no charging stations outside of tier 1 cities as of now, maybe in some 1 or 2 niche places, but apart from that it's very scarce. So what we're saying is that we will not invest in this infrastructure. The charger, which is our partner, will themselves buy the charging station, which approximately costs 50,000 or 60,000 odd rupees, and they will only maintain it. We will bring the customers to them, which will all of the charges will go towards these chargers, and we will just take a 30% commission out of this. So our capital investment would not be that high in this model because we will incentivize these chargers to set up their own charging stations, and we will bring the customers to them. All the cost, all the running expenses will be borne by them. Also, I would like to add that we are only investing on bringing the customer to the point of charging point. We are actually providing the customers through app to locate a charging point whenever you are needed and go there and charge your vehicle and then move on. So we are actually we are the intermediator between the charging point and the customer who wants to charge it. Right. So concluding it, why would the charger also want to onboard with us? Basically, it's just like a plug and play thing. They just plug the EV charging station, they provide 1 or 2 parking spaces, and they can forget about it because there's very minimum maintenance involved. Like we've seen in Norway, countries like Norway, USA, the charging stations are spread across the country, and they're unmanned. Basically, they're not being operated by anyone. You just bring your car there, plug in your charger, and that's it. And the owners will not have to be involved in the operation. So it's kind of a passive income for them. But I have one question. If Lijil sir, want to, you can go ahead. You can go ahead. I think I can wait for the follow-up question to be later. Okay. Go ahead, Vinay. I just want to ask, are you supposed to follow the OYO strategy like we are going to book? Yeah, so we're trying to imitate the aggregator model into this space. Sorry to interrupt you, but don't you think so that you need to book those parking slots of in which you will be providing the charging facility and all? How much amount a particular place, like whether it is a motel or a hotel, restaurant, whatever it is, they are supposed to invest their money, and how many return, how much return they will get out of it, and in how much time? Because, say for example, if so please ask someone. Yes, जिसके बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, जस्ट रिक्वेस्ट क्या प्लीज म्यूट पे चले जाओ. स्मॉल रिक्वेस्ट, जिनके बैकग्राउंड में नॉइज है प्लीज म्यूट पे चले जाओ. ओके. So, Pranshul and Unnati, your idea is brilliant. I'm not saying that your idea is not good. Your idea is very good. But when it comes to execution, like say, for example, if you ask me to put my 10 lakh rupees into your charging station, something stuff like, so my next question would be how much return I'll get out of it and in how much time. Because अगर आप मुझे, say for example, you said कि हम 30% कमीशन लेंगे, right? वो तो आपने अपनी बात की. सामने वाला पूछता है मेरे को क्या मिलेगा? What about me? Say for example, मुझे 10 लाख रुपए देने पर अगर आप मुझे एटलीस्ट मुझे वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं देते हो जो मुझे किसी को ब्याज पे देने पर या बैंक में एफडी करवाने पर या स्टॉक मार्केट में डालने पर मुझे मिलने वाला है, तो मैं उस पॉसिबिलिटी में नहीं जाऊंगा. पहली बात. नंबर 2, तो मुझे जो सबसे बड़ा एक लूप होल लगा इस सिस्टम के अंदर, आप ये सब जानते हैं कि तो जब हाईवे पे जाते हैं तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, राइट? अगर आप और डिस्टेंस ज्यादा हो तो दूसरी बात, हम लोग जब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाते हैं, एज लिटिल राइटली सेड, कि जो चार्जिंग का टाइम जो है दैट इज ह्यूज. तो व्हाट यू हैव प्लान टू रिड्यूस दैट पीरियड ऑफ टाइम, नंबर 1.
and what the customer is supposed to do in between that particular time. Have you addressed it कि उस टाइम के अंदर वो क्या करेगा या उस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? बिकॉज मेरे को जहां तक लगता है, अगर आपने एक मॉडल सुना हो, शायद सब जानते होंगे, बैटरी स्वैप करने का सिस्टम भी है. तो व्हाई टू चार्ज अ बैटरी? व्हाई नॉट टू स्वैप द बैटरी एंड जस्ट लाइक अब आगे बढ़िए. Yeah, Vinay, I would like to take the question up. So when it comes to battery swapping, when you bought the battery swapping thing up, the battery swapping thing is I mean, there are a few problems in that, because in EV space, when you remove the battery, if you go through the Neo model in China, so when you remove the battery and put it down, so there are different interoperability issues, I think, because Tata won't install the same battery as Maruti, right? So that is one thing which is a difficulty right now. And in the second thing, when it comes to the charging time, what we are envisaging is that when it comes to issues like in any mall, in any hospital, any restaurant, so people go up, they park their car, right? So what we bring in the manual expertise. We bring in people who can install, and it's not a capital intensive investment even for our chargers, right? So they can take this on lease. So we build a network, we connect the 2 points, we connect the business, we connect the consumer, and we provide the manpower, which in essence these people would not want to get into those spaces, right? So we bring in that. So as a consumer, if you are a consumer of an EV vehicle, then you would just come to us, you would just come to any sort of mall, you would park the car, we would have our EV chargers right there. They would charge you, I mean, you would pay $200-300, you spend time 4 hours, 5 hours in the mall, and in the interim you get your car charged. Aditya, when you are talking about the mall system, like as you rightly said कि mall के अंदर जाने का और आप अपना charge कर लेंगे, that's okay. But वो तो Lijil ने already topic उठा लिया कि भाई उसके लिए तो home charger है already. अगर मुझे say for example, अगर मुझे in the city, I want to like roam, I want to like मुझे travel करना है, तो मैं तो रात को लगा के चार्जर लगा के सोऊंगा, मैं तो सुबह तक मेरा बैटरी चार्ज हो जाएगा. तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी इट इज क्वाइट लेस. एंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस मॉडल, यू नीड टू एड्रेस द मास. सो दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम हैविंग एज ऑफ नाउ, कि मुझे जो बैटरी स्वैपिंग वाला जो बिजनेस है वो मुझे ज्यादा पिकिंग या यूं कहूं ज्यादा पिकअप होने वाला लगा इन फ्यूचर एज वेल. बिकॉज एज यू नो, एज वी ऑल नो, कि जितना ज्यादा ईवी का मार्केट बढ़ेगा उतना ज्यादा लोगों का जो बैटरी स्वैपिंग, अगर मैं कहूं पेट्रोल पंप के ऊपर आपने क्या किया, गए पेट्रोल फ्यूल टैंक आपने फुल कराया एंड अब आगे निकल गए, तो वो इजी है. लेकिन यहीं पर यदि मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे मीटिंग में जाना है और बहुत इमीडिएट और मुझे लगा मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं पेट्रोल भरवा के निकल जाता हूं. बट मुझे वहां पे पता चले नहीं, मुझे अभी 15 मिनट और लगाने का है, देन व्हाट? सर बैटरी स्वैपिंग के ऊपर आई टेक वन पॉइंट. बैटरी स्वैपिंग में सर कुछ यू कैन से इननेट उसमें ड्रॉबैक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेम्बर योर फोन, जो आपके पुराने फोन्स होते थे डब्बे वाले, उनको आप गिरा देते थे और उनकी बैटरी निकल के बाहर आ जाती थी. अभी हमारे फोन्स कितने रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं क्योंकि हम उसमें बैटरी भी नहीं निकाल सकते, उसके कंपोनेंट्स इतने ज्यादा उसके अंदर ठूस रखे हैं कि हम उसमें बैटरी अब उसमें नहीं कर सकते एक्सचेंज. सो बैटरी स्वैपिंग से क्या होता है, इट टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू इनोवेट. उनका रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि फोन में होता है, इन्होंने बहुत कंपोनेंट्स क्रैम कर रखे हैं इसके अंदर जस्ट टू मेक these things work like they want it to be. अगर if they introduce battery swapping technologies, तो manufacturers का innovation करने का काफी कम स्कोप रह जाएगा. तो that's why you're not betting on the battery swapping technology. And secondly, इसके अंदर एक और ड्रॉबैक ये है सर, if you create a lot of batteries just for them to be idle, just for prospecting them कि कोई आएगा और बैटरी लेके जाएगा, तो बैटरी में बहुत कैपिटल भी आपका ब्लॉक होगा. एंड बैटरी बनाना इज अ वेरी environmentally harmful process as well. So battery swapping, we don't see that it's the future. It's definitely good for the short term, but जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन आएगा तो वो चार्जिंग टाइम भी अपने आप कम होता जाएगा उसका. yes. So great यार. नहीं just a second. अरे रुको एक सेकंड ना. So we'll move to the next topic, right? Next topic, next pitch, because मुझे पता है ये काफी debatable issue है and lot of questions are there. In fact, I have 10-15 questions out. I can quote 15 different startups which are working on this. So again, मतलब that is that, ये तो चलता रहेगा. But यार great round of applause for the team 3, right? काफी अच्छा. Great job यार, great. So we'll move to next team, right? Again, अब जनता जनार्दन है, जनता से पूछते हैं कि कौन सी टीम पे मूव करना है. So sorry for the mentors. I think 2-3 questions left out.
बट इफ द टाइम परमिट्स हम लोग डेफिनेटली उसको देंगे, नहीं तो हमारे तो ऐसे ही 12 बजते रोज सेशंस में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे। राइट, हाँ। सो ग्रेट। यूट्यूब पे पूछते हैं, अक्षत ने तो पहले लिख दिया 1, ठीक है, तो विल मूव टू टीम नंबर 1। आई विल रिक्वेस्ट अ टीम 1 टू प्लीज कम एंड प्रेजेंट देयर आइडियाज। टीम 1 से कौन आ रहा है? Sir, we need hosting rights. Hosting rights. Who is presenting? Vishnu Kumar. Okay, okay, great. I've given you a co-host, right? I have a small surprise for every one of you. At the end of the meeting, I'll just tell to everyone, those who are present here. Great. So yes, Vishnu, you can start. All the very best, यार, team 1 को। आप अपनी विशेष चैट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, यूट्यूब से जो कनेक्टेड है वो और जूम से जो कनेक्टेड है वो। ठीक है, मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। अब से है ना टोटल टाइम Screen में share कर दे। One second. screen भी share कर दे। Gopal ji, you don't have to raise your hand. Only the speakers have to. Okay, no issues. मैं उसे हैंड डाउन कर देता हूँ। हुआ प्रेजेंटिंग, कौन इन्वॉल्व है? Vishnu, किंजल, Minky, मिंकी, Kinjal, Divyansh. Okay, 4 people are there. विष्णु स्क्रीन शेयर चालू ही कर दे। Okay, sir. दिव्यांश वही है कल जिसको तुमने ऑक्शन में बचाया था, देख रहे हो? हाँ। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिंकी, दिव्यांश, you can go. Sir, I am totally confused right now. As you know, I am in 10th class and I don't know which stream I should choose. I know bio is interesting, but I don't like it. And maths, I like it, but physics, वो तो कभी समझ ही नहीं आता, और history कभी याद नहीं होता. Sir, can you please guide me? Which stream should I choose? Divyansh, you're on mute. Minky, this is a very common problem with your age of group. So do you have taken any guidance from your seniors or colleagues or your loved ones or your known ones? Yes, sir. I took some advice from my seniors. Wait. I know. They must be like, beta, हमारी इसमें expertise नहीं है, please. So we are out of it. और तेरी आपको कैसे पता ये? How do you know about it? ये सबका दोगलापन है, you know. They will refer those career paths which actually they don't know, have any idea about it. And also schools have basically make a dhanda out of it. Yes, sir, but please help me out with this problem. How can I make a choice? Don't worry, I have an idea. Don't next. This confident. Just a second. If the PPT or video is sound, it's not coming. Wait. We'll do it again. No issues. Someone else can present, it would be great. Wait. अब आ रहा है क्या सर? Yeah. Okay, right? But it's lagging a lot. Lagging. सर मैं इसका Google Drive लिंक शेयर कर दूं क्या? I have. Share कर दो. Share it to other people. I think जो भी यहाँ पे है, I'll make a co-host. So sorry for the delay, guys. No issues. Take your time. मतलब take your time, टाइम तो जा रहा है। बता। चैट बॉक्स पे डाल दो, मैं कर देता हूँ। Do I need to download this? नहीं, do I need to download this? Sir, I have shared the link. हाँ, मैं डाउनलोड कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, great. I'll present it out. सर टाइम जा रहा है क्या? Good question. I can think this. ठीक है, I'll present it. ठीक है. Okay. 68% of students. Sir, audio नहीं आ रहा है सर. चलेगा विष्णु, go. Let it go. Okay. Sir, can you start again? Okay. Works.
68% of students don't know what to do next. And the sad part is that this shatters their confidence. That is where our AI psychological test comes in. Through our behavioral and analytical tests, we lend you a helping hand to guide you on the right path. But wait, there is more. We also help you out by providing you with courses that match your career goals. But is that enough? Don't we all want jobs that match our skills? We help you fast track your career. So Vishnu, how do we generate revenue exactly? So just hear me out, okay? Our major area of focus would be a B2B model by tying up with schools and colleges. Kaise? Can you explain? We will conduct the AI tests at schools post their first pre-boards, and where we will send academic counselors to retrieve them. How do we retain them? We are going to launch a freemium model of service, wherein we will conduct monthly webinars, competitions, and provide free flashcard facility to students. So how big is this market exactly? As you can see, approximately 20% of the population of India falls under our target group of 15 to 24 years old. And as you can see from this presentation, the urban population amounts to 29% of students and 15% of the schools are in urban areas. The second phase focuses on corporate training. Our end goal is to guide the student to make an informed decision regarding their careers. There's a famous quote that goes like this: education is the kindling of a flame and not the filling of a vessel. What children need is for someone to lighten them up. Someone to help them find their natural joy and curiosity. Someone who helps them explore their topics and which fascinate them. See the film where we believe in improvising, adapting, and overcoming. So further, we would like to explain our business model further. Our acquisition and market acquisition strategy would go as follows. First, we will use a freemium model whereby we give some services which are free and some would charge a premium subscription fee. Second, we'll host various competitions to keep a crowd engaged. And thirdly, we'll have an education portal whereby they can come and view videos on different skills and upskill themselves. Our product would cost us ₹100 per customer, but we will market it as $199. Whereas we say that at the price of one burger McDonald's meal, we give you a life-changing experience to pick a correct career path. We would also no business is defined by its every business is defined by its workforce. And for our workforce, we have adopted the WhatsApp model, wherein we have kept the core team members to a size of 8. And we are paying them with an ESOP, which has a minimum 3 years vesting period. And after the dilution of ESOPs, our shareholding pattern will come to 35 and 35% each. We would also like to add that we would go for an offline and online mixed model, whereby offline we use schools and colleges as our area to expand ourselves by conducting seminars and inviting parents and students to take the test, which will help them getting engaged on our portal. Secondly, by online media, we will make an app which will be available on iOS and Play Store, so that the kids who are from remote areas whose school don't provide the seminars can also have access to our portal. Also, our USP is going to be our AI, which is going to be developed in a phased manner later on, that it caters to language changing experience also. Basic AIs do not cater to language changes. Our AI would be developed in a later period at such stage that we can cater to tier 2 and tier 3 cities also, so that the input put in local languages of India can also give outputs which give a customized solution to our users. Our end goal is to make sure that students like Minky, when asked about having any difficulty in career, they can say very happily, "Career, hum bhi bana lenge." That's all. So we would invite all the monks to come invest in our business and see the fun. Thank you. Great. Yeah, round of applause. काफी अच्छा idea था. Right? Any questions from mentors? We'll take 1 or 2 odd questions. That's it. Yeah. Yes. I'll go ahead. Yes. Hello, sir. Yes, great presentation, team 1. So the main thing I want to ask is, how do you end up with the cost of ₹100? Because when you plan to launch your product in offline as well as in online market,
there will be a huge cost that would be required with related to IT, with related to all infrastructure, with related to AI. Second thing would be, how do you say that is your USP, that there is no other companies that are not in the same line of business? Because companies like Upgrade and when we see Byju's, they are in very similar like kind of business, and they're quite a giants. They are not going to let you get established. And third thing, how do you plan to make when you claim to have a fast track career in your job? How you plan to do that when you are saying that you can ensure fast track career in your jobs? How do you plan to cater that? The first main question would be, how did you end up with your cost of rupees 100? Because when you say that you can give your product at rupees 200 prescription fees, that will be the main thing that could end up you at a large scale audience. But first, that for that price, you have to come at the cost which is below 200. How do you plan to do that? So for one, because we had a 8-minute presentation where we would have gone to all the details that you have mentioned, because we are short on time, we had to cut on a lot of the meat. So to get to your point about Byju's, the thing about Byju's is it's focusing more on engineers, IAS. We are not that field. We are targeting the students. Like, students should not just think about the typical careers like a chartered accountant and MBA. There are many career options, and for that we are putting behavioral tests to know whether the kid is a creative guy. So you cannot make Sachin Tendulkar go and do an MBA. That's not his task. So through this test, we can identify that thing. First point. Second point, you were talking about the 100 rupees ka thing, right? So because we are a startup that is looking for a long run pickup, we are actually going in a trial phases. Okay, so in the trial phases, we will be targeting cities, just 2 cities, and these 2 cities have been formulated on a lot of research that we have done back end. So those 2 cities are, one Mumbai and 2 Bangalore. And as you can probably guess, we took those 2 cities because those 2 cities are the ones which are more adaptive to tech and AI and stuff like that. They are more adaptive to change. So those 2 cities will be our trial cities, and we will run with hopefully your investment in a 5 to 6 months model. And then after having a proof of concept, we will probably roll out to the other tier 1 cities, and the end goal is to probably get to the tier 2 and tier 3 cities by the end of the second year. Okay, and talking about this phase 2, the phase 2 is something which we are planning after the end of third year, because we want to first establish our own brand. And regarding the cost of online and offline, you were saying in the first point, coming back to that, is that the online and offline, because we have spent a lot of money on our backend website, right? So what we are trying to do is, when you are going to the schools, right, they will have these pre-board parent-teacher meeting, right? So what we are doing is, we are trying to nab the students at the grassroots level itself. So when a parent comes for his 10th standard or 12th standard student, and his child, and they're having a meeting, and they will understand that this thing will help their children in the long run. So we'll get the customer at the first point itself, and after that the main task is to retain the customer, because a customer can come and go away, right? So in order to retain them, we are having monthly competitions, we are doing webinars, it's more of like a credit card thing. We are just offering a piece of cake to them. So sorry to interrupt. You are saying you'll have events, you'll have free prescription given, you'll have flashcards given. You are planning to launch in tier 1 cities, where the cost of professors are very high, with cost of engineering is very high. So I still don't get up the main USP that I found is about that. One thing, let me complete. Yeah, okay. The main USP that I found was the revenue of rupees 200, because that was most appealing thing that I can get. Just like she said, at the cost of 1 burger. But for that, you have to get into cost. So that you will end up incurring a loss in initial years. So basically, our plan of model is when we are trying to establish a brand, that's why we went for 2 cities, because initially first 2 years, we are going to be burning a lot of cash building a brand. That will require unbelievable amount of investment. So no, and adding to the point of you saying that we are getting a lot of faculties, right? So the starting phase, we are trying to target the influencers. If you can see that a
person who has passed CA with a rank, within 1 or 2 months, he can get a Facebook following of like 10, 20K. That we are starting from the grassroots level. We are not trying to get the 1 million guy here because we understand that we don't have the amount with us at the moment. We are trying on a step-by-step basis to get that result from them. So yes, we will be burning a lot of cash, but in the long run, I think we can make a sustainable, Vishnu, brand. And thank you for all your input as well. Yes. Last question, last small question. Shivam sir, just Yes. you can continue, but I just giving a suggestion to Vishnu. Vishnu, keep calm. Yeah. Have the full chance to explain your idea in the fullest way, right? Because जितना जल्दी आप बोलेंगे उतना ज्यादा mentors जो है वो थोड़ा सा disturb होंगे आपकी पुरानी पिछली बात को समझने में, right? Please carry on, Shivam sir. Then I'll ask my question. Yeah. That would be all. Go ahead with Vijay. Go ahead. We are running short on time. Yeah, Vishnu and Kinjal, good presentation. I must say, good presentation, a very good idea. But I just want to ask one question, one single question. How AI can play a good role, or you can say a better role, to identify in which career option a student must choose? Number one, okay, number one. Number two, are you going to appeal the parents through your psychological or psychiatric type of examination, कि उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप अपने बच्चे का करियर चूज करिए या बच्चा अपना करियर चूज कर सकता है? एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ठीक है, आराम आराम से जवाब देना. एंड थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस सेगमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसी सेगमेंट में हूं, राइट, पिछले 4 साल से. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज राइटली लाइक शिवम सर राइटली मेंशन्ड ओवर हियर, दैट योर CAC, that is called cost of customer acquisition, is very high. Because when it comes to B2B market, remember one thing, you are jumping into a ocean of the hierarchy. Because I don't think so that how many times you must have gone for the schools pitching. आप hierarchy में मर जाएंगे. You will never touch the final point जहां से आपको permission मिलने वाला है. Number one. Number two, जहां पे आप B2C मार्केट में जाएंगे, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना ज्यादा हाई होगा कि you will never end up with cash burning. Right? So have you planned anything into like tackling or catering that particular market? So one by one पहले जवाब दीजिएगा. AI, how AI is solving the problem of career option, like choosing by the student? Who will answer it? पहले मुझे ये बता दो, किंजल और विष्णु या मिंकी, कौन जवाब देंगे इसका? If you want to go for the AI, I'll take the second one. Okay. Okay. You go first. Yeah, Vishnu, please. कौन बोल रहा है? You were going first, right? Yeah. I'll go So ahead. okay. Okay. So the AI aspect, how AI helps in the career opportunities, right? So basically there are 2 types of AI models. That is, one is the propensity model and one is a generative model. So the propensity model is used in marketing. So we are not, that's not something that we are focusing on right now. Maybe sometime in the future we might go there, but right now we don't want to be scattered and just lose focus and plunge all your investment. So that is not something which we are going into. So the AI segment that we are targeting is a generative AI. So what a generative AI is, that it takes questions and data which are available on the internet and the surveys that are available, and it collates everything, and the AI through machine learning learns what this stuff is, and it gives the answer to the students. And regarding your second Vishnu. Yeah. Here you have mentioned 2 things, and one of the amazing thing which is surrounding everywhere, like which is going hype or which is creating hype in the internet market, ML and AI. सबसे पहले समझिए, ML जो है बेसिकली मशीन लर्निंग, वो सारा डेटा साइंस का खेल है. इसके अंदर डेटा साइंस वाली कोई चीज नहीं है अभी के टाइम में. बिकॉज अल्टीमेटली आप बेचारे 6ठी क्लास के बच्चे को आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, या 10वीं क्लास के बच्चे को. आप उससे अगर बैठ के काउंसलिंग भी करेंगे ना कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, तू बता मेरे को, क्योंकि अल्टीमेटली जहां पे करियर ऑप्शन चूज करने की बात आती है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आती है. Right? And this is the like shitty thing about our education system, that we have only 3 options. Yes. Right after the 10th standard, either humanities, science or commerce, right? If the student feels कि नहीं मेरे को तो पढ़ने में मजा नहीं आता, he will take humanities.
अगर वो बहुत ज्यादा शार्प है तो वो जाएगा साइंस में, और हम है सैंडविच के बीच की बर्गर की पैटी, दैट इज कॉमर्स, राइट? तो इन तीनों में से बच्चे को किसमें जाना है, इसमें एआई का रोल क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आया। बिकॉज आपने जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाला पॉइंट मेंशन किया, दैट इज अप टू द मार्क, वेरी गुड, फिनोमिनल वो वाला आइडिया, बिकॉज वहां पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है एक स्टूडेंट का, एक एप्लीकेंट का, दैट्स ओके। But how through AI or ML you can identify or you can select like in which stream a student must pursue? ये मुझे थोड़ा सा ना क्रीपी लग रहा है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे ये आइडिया। मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने 2 सेगमेंट में अपना डिवाइड किया ये वाला बिजनेस मॉडल। एक आपने किया स्कूल के लिए, एक आपने किया है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इज बेस्ट, वो बहुत बढ़िया, बहुत बिजनेस मिलेगा वहां से आपको। लेकिन जब स्कूल की बात आती है ना, और दूसरी बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, पता नहीं स्कूल सिस्टम में आप कितना इंडल्ज हो, आप मुझे बताओ, आप अपनी बात कर रहे हो 15 से 24 साल के बीच के कैटेगरी को आपने लिया है, 15 इयर्स वाला 11th स्टैंडर्ड में होता है, राइट? अब 11th स्टैंडर्ड, पहली बात तो 11th स्टैंडर्ड में आगे बच्चे को खुद की पढ़ाई की चिंता नहीं है, तो वो कहां से टेस्ट देगा आपका, नंबर 1। 12th में उसे बोर्ड का इतना पसीना आ रहा है कि स्कूल ही आपको एंटरटेन नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली बच्चा जहां डिसीजन लेने वाली चीज है, अगर आपने यहीं पर ये मार्केट अगर आपने केटर किया होता राइट फ्रॉम द 3rd ऑफ द ईयर, लाइक 3 years टू अप टिल 12th और 14 years of children, I will definitely invest money, like my points into your business, because वहां पे बच्चे का मूड बनना चालू होता है, वहां से उसका माइंड डेवलप होना चालू होता है कि अच्छा मुझे किधर जाना है, राइट? कई बार आपने सुना होगा 3 साल के बच्चे ने प्रोग्रामिंग कर दी, क्यों? उसका इंटरेस्ट उसमें, और वही 3 साल वाला बच्चा जो है वो गिल्ली डंडा भी खेल रहा होता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ऑड है मेरे लिए, एंड जो मार्केट पोजीशनिंग होने वाली है आपकी वो थोड़ी सी गलत है। आई थिंक अगर आप हाफ डिवाइड कर दें तो स्कूल वाला आइडिया उतना मुझे बेस्ट नहीं लगता है, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाला आइडिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्कूल में that is the main reason why we are coming here, because we want to get feedback like this. So this is honestly speaking, we are also learning in the same ecosystem. Although I am a part of like ecosystem since last 4 years, but still I am learning and I am getting better and better. So ultimately वो जो मेरा जो insight है मैं वही शेयर कर रहा हूँ, because ये सब थप्पड़ खा चुका हूँ मैंने बहुत में गया हूँ मैं, and you will never find भाई एक अपॉर्चुनिटी तो मिले। जब फर्स्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था तो ये नॉर्मल है, तो मुझे लगता है जहां तक आपका जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो थोड़ा सा आपको राइट करना चाहिए। That's all from my side. So the main ultimate aim is that what the market is telling us, we will adapt to it. We are not a stringent like ये करना ही करना है. If the market is giving the signal that go and target 3 to 12, we will go there. That we are completely flexible in that, provided the market is giving us the proper signals. That is all that we need to do. Vinay sir, I have one last thing to just ask. Okay, actually, as far as the role of AI is concerned, what do you think about the behavioral analysis which AI does in modern day, which has become very, very, very good at picking up behavior of, even very small kids. For example, Amazon uses it to behave, to analyze people, how they will shop, or social media recommendations. So what do you think that should we? That's why we analyze because most of the kids spend a lot of time on their phones, so we can analyze their phone using AI. That's what I have already mentioned earlier also, that if you talk about the machine learning or artificial intelligence, it is nothing. It is all about the game of data science. You have collected a lot of data and you are continuously studying the data, and accordingly, whenever you're going to ask some questions to anyone, even you can take it in such a manner. Same question, if you ask to a particular child, like say for example below 10 years, and if you ask the same question above 40 years, you will find कि दोनों का जो perspective है वो totally different है. तो यहां पर AI का खेल नहीं चल रहा है, यहां पर आपने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जो यूजर है वो हर टाइम बदलेगा आपका. सो अल्टीमेटली जहां पर पॉइंट आ रहा था ना कि आप AI के थ्रू आप बच्चे को ये बता पाएंगे कि उसका करियर ऑप्शन क्या है. मैं कह रहा हूं कि बिना आप उसके, यानी अपना जो आइडिया है आपका AI वाला, आप उसके बिना ही आप ये बता सकते हैं सामने वाला करियर क्या ऑप्शन चूज करेगा. कैसे? बहुत सिंपल सा है. आपने बोला कि भैया बेटा तेरे को मैथ्स कंटिन्यू करना है क्या, वो बोलेगा नहीं करना. अब अल्टीमेटली आप कितना भी AI सामने बैठा दो, वो मैथ्स नहीं करेगा तो नहीं करेगा वो.
तो मुझे या तो आप थोड़ी गणित समझाएं, लाइक जिन भी मेंटोर ने आपको ये बताया, डेफिनेटली आइडिया बहुत अच्छा, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, आइडिया इज वेरी गुड एंड फिनोमिनल। क्यों? क्योंकि जैसा कि सर ने बोला, बाइजू इज ऑलरेडी यूजिंग इट। आई डोंट नो कितनों को पता है, ऑस्मो को उसने इसीलिए परचेज किया, इसीलिए बाय आउट किया यूएस की कंपनी को, क्योंकि वो डायरेक्टली एआई का ही यूज करना चाहते हैं, सो दैट स्टूडेंट का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो उसको थोड़ा टेक्निकल वे में लेके जाए। लेकिन वो भी जो ऑस्मो को भी उसने किया है, वो किसके लिए किया है? वो बिलो 5 इयर्स एज के लिए किया है उसने, क्योंकि 5 साल के। अच्छा, एक बात आप सबसे मैं पूछता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं खत्म करूंगा मेरी बात को। आप में से कितने ऐसे हैं जो जब पेरेंट्स बनेंगे तो उनके पास में 2000 का नोट होगा, या तो उन्हें अपने लिए कपड़े खरीदने या अपने बच्चे के लिए, किस पे खर्चा करोगे? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए क्यों? वो हमारा वो नाजुक कड़ी है। इसलिए आप किसी भी कंपनी को देख लो, वो हमेशा बच्चे को सेंट्रिक ले रहा है कि आपको अगर अपने बच्चे का फ्यूचर सेव करना है तो आप हमारे से पढ़ाइए, तो आप हमारे साथ काम कीजिए। तो अल्टीमेटली आप जो भी एआई का यूज करेंगे, यदि वो बच्चों वाले सेगमेंट पे आए, बच्चों वाले पे, टीनेजर वाले पे नहीं, बच्चों वाले पे आए, आप डेफिनेटली बिजनेस को बहुत प्रॉफिटेबल बनाएंगे। Great. Thank you, sir, for your. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. So great, yaar, great round Shivam of sir, Sir, applause. I think we have one more mentor No, who no. has yet to ask us the question. No, we'll do it at the end, right? Sir, I think. sir, I am not asking any questions. एक राउंड applause बनता है विनय सर के लिए. हाँ, मैं बिल्कुल Definitely. विनय सर के लिए राउंड ऑफ अप्लॉस और पूरी टीम के लिए भी राउंड ऑफ अप्लॉस। नहीं यार, it's more about the experience which you gain during a period of a time, right? मैं भी जब ज्वाइन किया था, and when I started CMO also, मुझे भी लगता था कि सब कर देंगे, तूफान मचा देंगे, right? और जब इंसान करने बैठता है तो उसे पता पड़ता है कि कितने तूफान मच रहे हैं और कितनी तूफानी लग रही है। Exactly. So, it's more of a learning part, but great यार, great kudos to विनय सर also. So यार नेक्स्ट टीम पे जाते हैं। अब आगे पिछली टीम से ही पूछ लेते हैं कि किसे नॉमिनेट करना चाहोगे। I'll ask विष्णु, बताओ कौन सी टीम को नेक्स्ट बुलाना चाहोगे आप? क्या जल्दी बोलो? टीम 4। ओके, चलो, ग्रेट, राउंड ऑफ अप्लॉस फॉर टीम 4। टीम 4 बेचारे यूट्यूब चैट पे लड़ रहे हैं इतनी देर से लोग, बोले ये धोखा हो गया हमारे साथ, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। I'll request टीम 4 to come in. Yes, sir. Team 4 is here. कौन प्रेजेंट करने वाला है? Anyone needs a right? Sir, I need the rights, Niharika. Okay, I've given you the rights. Yes, sir. यार मेरे को तो ऐसा है कि we can discuss on each topic for again 2-3 odd hours, but again that is what we can do. But again, looking at the time. Sir, the right is shared. Yeah, right is shared. So सभी all the best लिख दो यार टीम 4 वालों को फटाफट चैट बॉक्स में। देखो टीम 4 वाले टीम 4 वालों के लिए ऑल द बेस्ट लिख रहे हैं, बताओ। ये बड़ी नाइंसाफी हो रही है। Just a second. हाँ ऋतु भाई, ऋतु टीम 4 आ गई भाई। इसने Sir, the screen is available. Just confirm once, na? No, your screen is loading. Sir, right now means it is a blank screen right now, gray color. हाँ, कुछ अगला स्लाइड पे चले जाओ। सर अगले स्लाइड पे तो शुरू हो जाएगा। शुरू ही तो करना है। अरे नहीं। अरे स्टार्ट करो, कुछ दिख नहीं रहा है। Okay. निहारिका हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बस इतना ही दिख रहा है। Just a second, sir. Niharika, it's not visible. Yeah. Just a second, I'm just trying. Is it means right now? Is it visible? No. हाँ, visible है। Yeah, it is visible. Okay. Go to the previous slide. Yeah, okay. हाय मेरी कमर। अरे क्या हुआ तुमको? बहुत दर्द हो रहा है यार कमर में लक्ष्य। वाह, अभी से आ गया बुढ़ापा। तुम कौन सी 50 साल की हो गई हो जो अभी से? अरे मैं नहीं हुई 50 साल की, पर ये रोड और ये एक्टिवा से रोज ट्रैवल करने ने मेरी कमर की बैंड बजा दी है। यार तुम्हें पता है ना, हम कार नहीं अफोर्ड कर सकते। So, good evening, mentors, and good evening, everyone. So, we just encountered a very relatable conversation. We all are proud Indians, but it is also true that majority of the road tracks in India are filled with pets. See, you and me, each and every one of us use these roads on daily basis. But when we are using these roads, this have result in various issues, and they are also rising day by day. The issues are cervical spondylitis, back pain, and the issue of slip disc is rising at a very high rate. Explaining it with statistical issue.
statistical data. From statistical point of view, 60% of the patients are coming for back pain. They are having severe back pain issue. And amongst those 60%, 20 to 25% patients experience the pain of slip disc. See, this is a major issue, and this issue is increasing day by day at another level because of longer distance travels. Now, after understanding the problem, who are the major people who are affected by this problem? So the affected segments are the regular travelers, the local distance travelers, long distance travelers, and basically mountaineers who are using two-wheelers for going from one place to another, except bicycle. But these are the affected segments because they are using two-wheeler on these roads. But after understanding what the problem is and what the affected segment is, the main thing is what is the solution. See, I can't even tell you how many times my father came home and told my mother that आज तो कमर में बांध लगा दे, आज तो टूट गई कमर सड़कों की वजह से. So the solution is कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि something that can provide a support to the lower back and hip area while we are going on the road, while we are operating our vehicle, when we hit the pit, कि जो lower back और hip area है कि उससे एकदम से झटका ना लगे. The support is provided to our hip area. Along with that, convenience of movement. While we are operating the vehicle, we should have convenience of the movement along with the support to our hip and lower back area, so that it can prevent injury caused by regular back pain. Next. Okay, so now the market size. So in 2019, the market size was $31.1 million, and it is being projected that by the year 2025, the market size of the two-wheeler industry would be $94.0 million. That is, the market growth rate is 20%. So by this, you can easily see that the increase in the number of our customer base. Now, why now we are launching this product? So there is a drastic increase in the medical cases of lower back. Earlier, people around the age of 50 years or more had the back problems, but now even the teenagers are also suffering from this problem. And as per the stats, 30 or 35% of our income is being spent on the medical expenditure. So we aim to reduce the medical expenditure. Now it's time for our product. It is Travel Buddy. We got your back. So our business model is B2B business segment, where we will be connecting with two-wheeler companies, including the accessory shops, including the manufacturers like Hero or Honda, and we will generate the income by providing them the distribution rights, and also we will charge per unit basis income. Also, we will also go through the e-commerce platforms. We will connect through pharmacy, 1mg, Flipkart, Amazon, where we will charge our per unit basis income. So what are the market strategies which we are targeting? Like in the initial stages, we will go with events. Like we will organize the events with the colleges. We will provide the winners the free belt which we are producing at Travel Buddy. Also, we will go through the promotions, social media promotions, because majority of us are there on the social media platforms. And another will be through influencers. Nowadays, there is an era of influencers on the YouTube. So we will also attract them, and then through them, we will introduce our product. That's it. Thank you. See, the Travel Buddy is a belt that we will bring forward that will support the back and lower back and the hip area. It will be the belt that will be provided, and that is what we say, we have got your back. Also, staff, we want you to invest around 500 points on our product. Thank you. Great. Round of applause, yeah. काफी अच्छा pitching था, right? Any vendors, any doubts? I'll start. Yes, sure, sir. Yeah, very good presentation. Best was hi, Meri Kamar, Niharika. That was great start. Few things. First thing, you mainly focus a pure feedback on what solutions that your product would be giving, but rather than what is your product. In last Kamakshi, I think so, just mentioned what is your product. That is a belt.
Yes, right? sir. So There is. basically, I'll complete my questions. Yeah, Then sure, you sir. can answer it. So what is the USP of your belt? So it's just a belt that you will be wearing and riding two-wheelers and climbing. That would be first question. What is exactly your product? Second thing, if you are launching some product, a similar belt is already exists that we can tie in normal pharmaceuticals. There are similar kind of belts. So what is differentiating factor in your belt that we don't have in the market right now? And third thing, don't you think it just a simple belt type of thing, such huge pharmaceutical companies or any other person won't be able to copy? Yes, sir. Sure. So the first, I think our product will be a kind of belt. The feature which we will be providing, that it will be a detachable belt. That is, either on the one side you can have the hot bag, and or we can have the cold bag also. That is a product which is the USP of the product, because I don't think there is any product in the market right now which is a kind of detachable belt. Secondly, sir, we would like to introduce that our product will be very comfortable. The one which you are telling in the market which is there, it is a belt which is there for the slip disc. Mainly it is coming in the black color or in the mustard color. So the issue is that there is a hard kind of we can say cardboard kind which is It there restricts in the the back, movement. at the back of the we can say spine. So sir, because of that, we even doctor suggest that we cannot even eat while wearing that belt. It is very difficult to eat also. So how we can travel through those belt Sir, I for would like to long hours? continue further that the belt which is currently being in the market used by the pharma companies is the like it is the next stage, and we believe in the prevention is the cure. So we believe in the fact that we want to prevent this problem, and the belt that is currently in the market is used when you are already suffering from the problem. So how do you plan to convince someone to wear a belt if you are saying it's a cure? So you expect I don't have any problem with my back, and you expect me to wear a belt and ride a bike. So So it's how just do you like plan that. to? So you It's don't have just a like problem that. now. You are convincing a person to wear a helmet because it's just a fact. You can see like if your Yeah, friend is definitely. suffering. Yeah. People don't even wear helmet in it's in Mumbai. Most of the people in Gujarat, many Guju people over here don't wear helmet. Sir, So it's such an important thing people don't wear. So people don't wear. So how are you going to convince them to wear a belt? if one is not even interested in saving their lives, then we will just pray for them. If one is Sir, not concerned about their life itself, like they are not wearing the helmets, they are not wearing the belt. So we have seen that nowadays the teenagers, right, they are not able, they are not having that much of earning that they can afford a car at the starting. So most of them are going through two-wheelers like bikes or activas. Right. And due to that, due to the long hours, even we as an articleship student, we had to move along a lot of the client places. We started suffering from backache at a point of time. So sir, this is a very serious issue which not only India, I guess all over the world, everyone is facing. So one needs to think about it. And also we will get a first mover advantage. Moreover, we need to highlight the fact There is that no first thing, there is no first mover advantage. First thing. And secondly, how do you plan it's a simple build that you are gonna come up with. There is nothing like unique that one wouldn't be able to copy. And there is no revenue model also being shown, like what cost or sales Yes. that you are planning to go ahead. Yes. Maybe because of shortage of time, I completely understand. But that would be main few things that I would like to know. Yes. Like you said, it is one of the most major issues that one comes across. So, but I don't find anyone to wear a belt before having some issues. According to me, that is my perception. So that's so why sir, we that want is to why in our inculcate promotion this. checklist, That's why we need to inculcate that prevention is better than cure, rather than spending around 8 to 10 percentage of your income on the curing your slip disc, and that is a very uncurable disease. Even my mother has that. Even that cannot be cured after it has happened. So why to move that? Why to move in that thing? First thing, we are going to promote that, and secondly, I would like to bring your insights to the cost model. Like for the initial stages, if we are targeting the mass, there is the mass, there is no like restricted area, this is the mass. So if we produce 1 lakh of the units at one set, we will have our cost like around 650 per unit. And as such we started increasing, like the next stage, if 10 lakhs units are produced,
So our cost will be reduced to around 400 to 450. And then suddenly, then if more is produced, like in the 1 crore or so, our cost will also further be reduced to around 300 or 315 rupees per unit. Also, if we go to the revenue model right now, we will give the cost plus 20% of the margin. That will be a revenue model. Just one last conclusion. Yes, Lakshya, yes. if I would ask you, if you ride a two-wheeler, Yeah. would you wear a belt and ride if you launch a product tomorrow? Just a question for you. Answer Definitely, honestly. sir. Definitely, sir. I would definitely wear it because I simply believe in the fact that prevention is better than cure. I don't want to suffer such a problem in this early age. Nice thought. Can I Thank you. ask you a question? Yes, yes. I can counter it by the way, but ठीक है मैं नहीं करूँगा. ठीक है. I like कि मैं कल बेल्ट भेज रहा हूँ बेटा. Send me a pic. Selling the product, so you cannot be wearing that. Anyway, Yes. so first of all, like I interesting presentation, I would say, but then now Yes. I was confused a bit on what is the problem you were trying to solve for a while. I was like, is it the cutter in the road, or is it the suspension of the bike, or is it like the people's problem of the back? So a lot of problems are being discussed. A lot of them were there around. I totally agree with. See, first of all, like I should say, I've never looked at a model so it's, of a pharmaceutical product of this line, so it's not my expertise to comment a lot of. So I have more questions than giving you suggestions on this. So one question that I thought I had is like, see, you're not a pharmaceutical company. You're coming up with a with a product which is of course something that you will have to educate the people, like Shivam sir was correctly pointing out. Arya, like our policeman is trying for years and years to put helmet on our head, and people are not even following that. It's, see, back pain is better than death. You could die without a helmet, okay? So people are not wearing it. So how do you convince this market? And 20% profit on 300 rupees ka product is how much? Like 60 rupees. Yeah, like one customer is going to give you 60 rupees. You look at the lifetime value. Your product is going to be holding for a very long time. Nobody is going to keep buying this. Helmet, at least you can break, or fancy helmets you can give. You cannot give fancy wing waist belt around you, right? Nothing more. Once I bought, it's done. So your customer acquisition cost will never give you any solid profit revenue out of this unless you add a lot of product and become an ortho based company which gives a lot of product on, and then you can keep adding to this particular customer. Otherwise, how are you going to make money out of this whole world? Sir, can I answer that right now? Or Sure, go ahead. yeah, okay. So firstly, the thing which you told, that how we are going to convince in the initial stages, like we are going to launch in tier 1, tier 2 cities, and throughout the model which we told, like two-wheeler companies and e-commerce platform. Further, like if they are successful in this area, we will also move to the pharmaceutical companies, tie up directly to the pharmaceutical companies, and also along with the doctors and the hospitals and the medical practitioners. So that will be our model, first thing. Secondly, which you pointed out, that how the 20% margin will be good. So even boat, we have all heard about the boat company. In the first year of its launch, it hardly had 3% of the margin. In the second year, it had 12% of the margin. And in third year, if we see, it is 13.37% of the margin. So, sir, at the initial stages, if we say we are putting 20% of the margin, sir, so that will be at a very big scale, first of all. And secondly, sir, we are targeting the mass. Mass is something that if we provide them the cost, least cost, and there is no such other providing such thing, then they will definitely buy it. Because as a mass, as a youth, we can even think that where there is a less product and a good quality product, we will buy that. So this is the second point. And the third point, that how we will able be to convince them. So third thing, so youth are very health conscious nowadays. They are like, they can spend a lot on the being very fit and having no such kind of disease which they are seeing in their parents right now, or which they are able to foresee it. So they will spend, sir. Youth is something that they are like
like vegan diet and keto diet and 12 hours fasting and what not they all try. So sir, why not they will try with this belt? If they are able to protect their backbone, then why they won't be able to invest hardly 600 or 300 rupees? So I'll tell you Sir, a I couple would of like things. to add. You already have competitors for this particular product. Your product is just an upgrade to an existing belt. So when somebody is going to purchase this belt, and even if you make them make a decision, you think about the marketing cost that you would have in terms of convincing somebody on this. And see, what I'm trying to tell you is that any startup you look at a lifetime value. You have just one product and one customer. So one customer, your profit contribution in the complete life of his time is 60 rupees. That's what you're saying, So the right? shelf So life, so the actually, shelf life will be of 2 years. The yeah. shelf life of the belt will be of 2 years. It is not that one customer, if the customer buys one time, then he Yes. won't be buying it again. The shelf life of the belt would be Yeah. 2 years if used appropriately. So as I have mentioned to the answer of the Shivam sir, that it is a kind of detachable belt. It can come with a hot bag and it can also be available with the cold bag. So our shelf life will be restricted. If you are using it in a frequent manner, it will be around 1 to 1.5 years. And then if you are using it in a moderate time, then it can be up to 2 to 2.5 years also. So our customer retention will become a good percentage. It's not that like one lifetime product customer we are creating. So I think so. See, it's an easy entrance market that you're having. Any pharmaceutical company or ortho company, it's just fraction of a minute. They'll buy your product, they'll copy. They have large spectrum of distribution So already ready with we them. would be patenting our belt, no? We would be There is patenting it. already. That's why we can Pattern on a hot distribution bag. license the Sir, company. I can just one thing already I would show you. like to mention, sir. Just one thing. Sir, if the market is such a booming, why after the Swiggy, why after the Zomato, Swiggy came, and secondly, why after Ola, Uber came? Right. It's So about so so our just a pitch. minute. Right. Again, I know this is a lot of debatable question. Let's not go into this. Let's stick to Great the job. CMONG thing, right? Tank, right? So round of applause for team number 4, yeah. Good job. Great efforts, innovative ideas. Again, funding मिलेगा नहीं मिलेगा, points मिलेगा नहीं मिलेगा. That is subjective, but idea is something good, which we are here for. We love the process. Right. We The love the process is process. important. Life में process ही important होती है. Process सीख गया तो आदमी कोई भी चीज बना Sir, सकता and है. having Vinay sir on board, we were like, sir, let's come on, go on the meeting, sir. Yes, sir. 2 hours, 3 hours, let's go on, let's discuss new ideas. Assure extra 100 points for Vinay sir. Okay. You need to give it, ठीक है भाई, बाद में note down कर लेना. I've seen कर it. लो. Obviously. Can I invest in Vinay sir? Somebody was asking. I have the same thing. Can I invest in him instead of can I give him the point? I was Surely, if you want to invest your money in my business, I will definitely take it. I think we should get back on a different pitch altogether. Sure, definitely. यार कोई टीम 2 वाले मुझे भी फंडिंग चाहिए, मुझे भी पिच करने दो. बोलने दो. Sure. So All यार, the best, team 2. टीम 2 के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज यार. इतनी देर तक बेचारे वेट करके और गमछे लगा के बैठे हैं कुछ लोग तो यार. मुझे काफी एक्साइटिंग लग रहा है, पता नहीं, but good to see this. Anyone needs a screen sharing presentation? Yes, sir. Harshita here. Yes, So I would begin by saying Jai Kisan, and I would request all my Kisan, aka farmers, to come forward by raising their hands. And I need the screen sharing rights for Bhavesh and Madhura. And let's begin. Yes, एक सेकंड बस स्क्रीन शेयरिंग देने दो मुझे. So we are here with all the farmers. So it's very clear we are going on with the agricultural pitch. So hello monks, please do invest your points in this idea. Hello monks. I Akshay Bansal. Yes, Akshay, you're audible. You can go. Please. Akshay, please go ahead. Yes. Hello monks. I Akshay Bansal and my colleague Madhura Borde, we will present before you our startup idea. So Madhura, do you know about the meaning of B2B? Are you kidding? I obviously know this. Okay, so what about B2C? I know that already. Why are you asking me such silly questions?
And what about F2C? That is something I have not heard about. What is that? I think our monks are also don't know about that. Can you please explain me that? What is F2C? So the main reason our farmers are committing suicide and they are very poor is because they didn't get enough value of their productions and because of the natural disasters. So exactly, we are here with our idea of Jai Kishan, in which we will develop a platform and an application which will connect the farmers with the consumer. So now mentors and all our audience will get to know that F2C is farmer to consumer. So we are trying to build a new concept that is farmer to consumer. Yes, the farmer to consumer is an idea where we are connecting the farmers directly to the consumer. Mainly, what happens is the middleman are there in the middleman gets their commission, which is so high, and we get the vegetables and fruits at very high cost in our area or in urban areas. So we are there with the idea to reduce the middleman commission, get the farmer directly uh, directly the production, get their production directly with us, farming and paying them directly, and then storing their produce at our warehouses, and then using AI technology for quality verification of shelf life assessment. We will divide all the produce in two parts. That is the one which is having which is a good product, and the second one which is having a bad shelf life, or we can say that it is the shelf life has been reduced. So we must sell that products within very less time. Okay. The problems here are faced by is the selling agriculture goods at very low prices. We are here, so the agriculture produce we will buy from the farmers at market at more than market price, at more than minimum selling price, which has been decided by APMC generally. And our e-commerce platform will daily update the market prices on that platform, and then we will instantly pay to the farmer, get back their produce at our warehouse, and then we'll distribute the vegetables as per the consumer's orders. We will charge only 2% commission from the consumer only and not from the farmer. So here farmer is safest, and he is getting his liquidity cash right at the point of sale only. And we have also have the premium services to the farmer on nominal charges and detection of on nominal charges. Then I'll hand over to Shivam. I think Bhavish. Yeah. Hello, mentors. Now let's discuss about the benefits it gives to the customer. We are providing fresh products directly to you at fair deal. So customers don't worry about unfair price, weights, and worrying about sorting best quality of produce. And for the farmers, we are here for you. We are purchasing above MSP. So how? As we have removed middlemen, and now we will share our profit with you and give you prices above MSP. Now let's discuss about supply chain with Shivam. Okay, so in this interesting concept, all will be interesting. What would be the supply chain? So I would like to give a brief idea what would be our idea behind the supply chain. Mainly the idea focuses on taking the produce directly from the farmers, which would be taken to the our warehouse in a local area. So we would get the assistance of a GTA, not buying the vehicles on our own, and storing the goods that we got from the farmers in the warehouse. When we store the goods in the warehouse, before that we'll do a AI verification. That is, we'll use the artificial intelligence technology to get an idea what is the quality of the product. So we'll know what life the product will have after this storage in the warehouse. So accordingly, the pricing of the product will be decided by the AI, and and the same information will be updated in the e-portal, which would be introduced by our team in this idea.
And nextly, from the warehouse, it would be then supplied to B2C. B2C is like directly to customers like normal us people, which would place their orders one day before, because we say that we'll deliver in one day your goods. So the customers will place their order on the e-portal, and the order will be fulfilled by the warehouse in the one day time. So, and also our second segment is that B2B sale. So along with normal customers also, we are selling to the restaurants and the food manufacturing companies also. So what happens is that every product has not a good quality. Some are like below good, like they are good, but the shelf life has been 1 or 2 days. So the prices would be deteriorated, like it would not be the highest price. So that we could give to, as per our contract terms, we could give to the food processing units or restaurants, because they would buy that because it would increase our profit. So this is our basic supply chain, which would help us in expanding our business. So nextly, I would like to give a idea about what we did past 1 month. So this is the idea that we applied in 100 farmers. So in Pune, we implemented this idea, and I'll share the average order value. What was the concept? This was the concept, but what was the revenue we generated, and what was the cost incurred by us in this? So, monks. As we speak about the average order value, that is the order value of our products is let's say it is 20 rupees. So out of the 20 rupees, the maximum share goes to the farmers, that is 10 rupees. And apart from this, our indirect and direct expenses, which include the logistics and the AI or the administration cost which we incurred, it is 8 rupees per order, and the profit which remains with us is 2 rupees. So you would be thinking, what is this? Why would we invest in this 2 rupee giving business? So my question is that if I am telling this for 1 kg of order, so in a month, as we see, our order is like 200 kgs into 100 farmers in the beginning. So it would generate a revenue of 4 lakh rupees 1 month. And then cost would be incurred like 2 lakh rupees for the cost of purchase, and 1 lakh 60 for the direct and indirect cost. So this when the business expands, when we go to a large chunk of farmers, when we expand our business, this would be a major profit making company, I guess, and it would not only benefit our company but also the farmers at large. So in the end, I would like to bring up Akshata, she will tell us about the projection of our future expansion. As Shivam told, that our revenue will be 48 lakh for year 1, and if we assume a growth rate of 50% of the farmers, that will lead to 150 farmers, and then our revenue will increase to 72 lakh, and eventually it will increase to 1 crore 8 lakh, then 1 crore 62 lakh, and then 2 crore 43 lakh. And similarly, our profits will also increase on a margin of 50%. Yes. So as we get an idea that this is a major profit making business, at the same time, it is a social changing situation. This will change our society drastically, because the farmers will be happy. And because of that, everyone in this society will get quality food products. And at the end, I would like to give an example that when I stated this pitching idea to my mom yesterday, so she was greatly impressed by it, and she also liked it, because I am a child of a farmer. So we could relate to this. And she said, even if this idea doesn't work, I'll pitch for, I'll invest in this idea and we'll take forward it. So we as a team too, I would like to invite all, and we would like to give a slogan at the end. Team 2, can you unmute yourself, please? Okay, 1, Yeah. 2, 3. Jai Kisan. Jai Kisan. Yeah. Yes, thank you for your appreciation. Great. It was very appreciated. Round of applause यार, round of applause for team 2. काफी अच्छा presentation. और मुझे काफी अच्छा लगा यार. I was looking at this कि काफी लोग गमछा बांध के बैठे हैं यार, तब से मतलब वो निकाले ही नहीं है, right? So that is again a
dedication which I have seen यार. Great. We'll take 1 or 2 questions. I know that यार काफी लेट हो गया, कुछ लोग मुझे गुस्से से देख रहे हैं यार, but ठीक है. It's fine यार. If you are doing something great. Any questions to any mentors, right? Yeah. Yes. I'm seeing that Rupal is also part of team 2 because she was one of my students. Okay. I hope if she Yes, was, sir. okay. So first of all, a very good idea, a very revolutionizing idea, I can say. But there are big challenges which you probably not mentioned yet. One of the biggest challenge which even the government itself couldn't solve it, and that was the storage part. It is not a problem. It is a, you can say, a blunder even for the government to solve it. Because when the Sharad Pawar was the agriculture minister, at that point of time, you won't believe there was a situation in the country जिसमें लोग भूखे भूखे मर रहे थे, उनको खाने को नहीं था. And there was a documentary जिसके अंदर दिखाया गया था कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर पता नहीं कितना टन जो अनाज था वो बारिश में यूं ही खराब हो गया, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में जब मॉनसून आता है तो कैसा आता है. So जो आपने वो जो स्टोरेज वाला पार्ट बोला, एक तो वो मेरे माइंड को कहीं भी लाइक समझ में नहीं आया. नंबर 1. नंबर 2, अगेन यू यूज्ड दैट एआई वाला पार्ट इनटू इट, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है यहाँ पर, मुझे 2 बातें आपसे पूछनी है. नंबर 1, हाउ टू अप्रोच द फार्मर, बिकॉज जिसके लिए जो एएमपीसी की आपने बात कही है, राइट, जो मिनिमल जो सॉरी जो क्या था वो मिनिमम प्राइस पॉलिसी, राइट, तो जो वो वाला जो पार्ट है वो तो गवर्नमेंट तक अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, वो आप कैसे करेंगे? नंबर 1. नंबर 2, इसके अंदर जो वेस्टेज होने वाला है वो इस लेवल का होगा कि जो आपका 2% कमीशन है वो -7% पे भी चला जाएगा. कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना आप बॉट आउट करेंगे उस चीज को, उससे कितना परसेंटेज वो वेस्टेज होने वाला है, दैट वी डोंट नो. 2 पॉइंट ये. एंड नंबर 3, जो मुझे सबसे ज्यादा चीज खली वो मुझे कहीं मिली नहीं, जिसका मैं लिटरली वेट कर रहा था जब से मैं आपको देख रहा हूं कि आप गमछा पहन के बैठे हैं, दैट वाज द ऑर्गेनिक फार्मिंग. बिकॉज एक्चुअली दिस इज द yes. Sorry dear, what do you say? Sir, it was in my presentation. वो pitch करना रह गया, पर we are providing organic support to the farmers for the organic farming. Yes. But how you will do it? Because ultimately that for that you need to make them aware कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग होता कैसे है. ऑर्गेनिक के लिए फार्मिंग के लिए जो सप्लाईज हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, वो कितने का आपको पड़ेगा और कितना आप सामने वाले को देंगे. ये थोड़ा अगर 2-3 चीजें मुझे आप समझा दें तो definitely I will be interested. Okay, so yeah, who wants to take my questions? And मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में कहूँ आपको मैं कि आप ना मस्त बिंदास हिंदी में बोलिए. शार्क टैंक पूरा हिंदी में था. हाँ सर, हाँ. राइट, कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो इंग्लिश सुनने को बैठा है. आप आराम से इवन आप गुजराती में बोलेंगे, माने गमे छे, ठीक है ना, ठीक है ना. तो आप you just enjoy your pitching. It's not like you just want to impress us in English. वो हमने भी करके देखा, कोई नहीं हुआ. जब समझ में आया. Correct. So just go with the flow. Just keep your mind comfortable and be yourself. आप जो भी बोलेंगे हमें सबको एक्सेप्ट होगा. Now please continue with the questions. Yes sir. मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए. स्टोरेज जो आपने फर्स्ट पॉइंट बोला मुझे स्टोरेज का, तो हमारा बेसिक आइडिया क्या है सर कि विल स्टार्ट विथ स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर्स. जैसे हमने 100 फार्मर्स का एग्जांपल दिया आपको, तो हमने क्या किया कि वी डिसाइडेड डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट समझो, फॉर एग्जांपल. तो पुणे में हम क्या करेंगे, विल अप्रोच फ्यू फार्मर्स जो कि रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर जो उनका रेगुलर प्रोडक्शन है उनको हम फोकस करेंगे पहले. उनसे हम जो डेली का है उनका प्रोडक्शन वो उनसे लेंगे, और हमको ऑर्डर्स भी डेली मिलने वाले, क्योंकि सर जो आपको भी पता है कि हम वेजिटेबल्स की ऑर्डर खत्म नहीं होती है, वो डेली चालू रहेगी. कम से कम एक दिन पहले हमको पता चलता है कि हमारा वेजिटेबल्स खत्म हो रहे हैं, हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा बाबा. तो हमारे पास ऑर्डर भी डेली आते जाएंगे, और जो प्रोडक्शन है वो भी डेली आता जाएगा. मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो डेली आता जाएगा. तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, नॉट टू स्टोर एनी गुड्स. As we pick up from the farmers, we'll try to directly deliver it to the ये अपना कस्टमर्स को डायरेक्टली डिलीवर करेंगे. स्टोरेज का ज्यादा कब फायदा होगा कि जब हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं आ रहा है हमारे पास. जब ऑर्डर नहीं आ रहा है
तो हम कोल्ड स्टोरेज या जो उसके वेजिटेबल्स के लिए जो नीडेड है वो हमारा स्टोरेज का कॉस्ट आएगा सर। शिवम, एक मैं पॉइंट ऐड करता हूँ आपको, मैं वो मेंशन करना भूल गया था। हाँ हाँ आपने यहाँ पे जो बोला ना B2B एंड B2C, यस 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 don't you think so कि it is quite difficult for you to address both parties at the same point of time? Because B2C sir. is all about the different ball game, and B2B is again because it's a volume game when it comes to Yes. B2B market, and Yes. B2C market when it's a tiny like volume, उनका बहुत छोटा छोटा volume होता है, तो Yes, जब yes. उनको आप सप्लाई करने जाओगे it will be a costly like जो प्रोसेस रहेगा वो आपके लिए ये रहेगा। तो आपको नहीं लगता आप दोनों को एड्रेस ना करके आप सिर्फ एक पर रहें और जिस पे रहना चाहते हैं वो कौन सा होगा? नहीं सर, एक एक इसको ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं पॉइंट पे, आपने बराबर बोला। पर मेरा आइडिया क्या है सर कि जैसे समझो एक अपना एक कौन सा तो ये लेते पटेटो लेते, तो एक पटेटो का लाइफ समझो 4-5 दिन है अपना। तो फिर जो हाईएस्ट प्राइस पे बिकेगा ना, जो B2C बिकेगा हाईएस्ट प्राइस पे, वो तो फ्रेश माल चला जाएगा। और जो माल को 1-2 दिन लग गया बाबा कि उसका थोड़ा क्वालिटी कम हो गया, तो ये कौन खरीदेगा? B2C तो मतलब नॉट विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट। तो हम ये बेचेंगे B2B वालों को, क्योंकि उनको कॉस्ट कम कॉस्ट पे चाहिए और ये माल भी हमको वेस्ट नहीं कर रहा है, तो हम उनको कम कॉस्ट पे दे देंगे बाबा। उसका क्वालिटी कम हो गया तो उसको कम दे देंगे। पर ये B2B को कैसे करेंगे? हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देंगे, मतलब दे कैन अप्रोच द पोर्टल आल्सो, बट मेजॉरिटी B2B को हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डील करेंगे सर। ओके अच्छा, अब वो जो कमीशन वाली बात थी उसका क्या सीन है? 2% कमीशन पे कैसे सरवाइव करोगे? आपने ये तो बता दिया मुझे कि वॉल्यूम का गेम है ये। ठीक है, आप 100 किलो ले रहे थे, आप हर का फार्मर का है 200 किलो ले रहे थे, मैं कहता हूँ 2000 किलो आएगा, मान लिया। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि उसके साथ में जो आपका कॉस्ट आएगा वो भी उतने ही मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ता जाएगा। तो 2% कमीशन पे आप कैसे सरवाइव करेंगे? सर इसमें कंसेप्ट थोड़ा कैसे, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बताना चाहूंगा कि समझो अगर आप टॉफी खरीदते हुए, तो एक टॉफी का कीमत तो 1 रुपया है बराबर। तो उसका उसको प्रॉफिट जो कंपनी बेच रही है उसको प्रॉफिट कितना होता है उसके पीछे? 0.1 मतलब पैसे, 10 पैसे का उसका प्रॉफिट होता है। तो उस दिखने में तो वो छोटा प्रॉफिट दिखना है अपने को, पर जब वो कंपनी हजारों मतलब 100 ऑफ करोड़ वो टॉफीज बेचती है पूरे ईयर में, तो उसका प्रॉफिट तो 1 पैसे इज 10%। शिवम, आई गॉट योर पॉइंट, बट पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये, आपने पल्स का नाम सुना है? पल्स का नाम? हाँ 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 राइट। जैसे शायद लिजिल सर ने भी हमारे वाले प्रोडक्ट के लिए बोला था कि फार्मा कंपनी कभी भी आपको कर लेगी, लाइक आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगी। मैं उस टाइम नहीं बोल पाया, लेकिन चलिए मैं उसके पॉइंट पे बाद में आऊंगा। लेकिन यू नो व्हाट, पल्स की जो टॉफी थी उसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या था? इफ एनीबडी कुड लाइक टेल मी, क्या उसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर था, अगर कोई बता सके तो? सर वो जरा तीखी, उसमें तीखापन था, मसाला था। बस वही चीज। एंड यू नो व्हाट, ये किसका प्रोडक्ट है? पार्ले। ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? पार्ले। नहीं, डीएस कंपनी का प्रोडक्ट है ये, डीएस ग्रुप का, राइट? जो रजनीगंधा है, तुलसी, ये समथिंग बनाता है। अब सबसे बड़ा मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ वो ये, उन्होंने इस चीज का भी पेटेंट करवाया था। अच्छा, पेटेंट इन द सेंस, पेटेंट तो नहीं बोलूंगा, बट कॉपीराइट दिया था फॉर 2 इयर्स। क्योंकि हम लोगों ने सबने ना आम वाली गोली पहले खाई है, कच्ची कैरी, कच्ची आम, आप कच्चा आम समथिंग सुना होगा ना आप लोगों ने, राइट? उसका गोली खाया अपन ने, लेकिन बीच में मसाला डालना ये तो अपने भी दिमाग में नहीं आया था, जबकि हम लोग जीरा तो पीते आए अभी तक। मेरा पॉइंट क्या है, छोटा सा डिफरेंशिएट किया और आपका प्रोडक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। तो जहां पर आपने टॉफी का बात किया, टॉफी का शेल्फ लाइफ बहुत बड़ा होता है भाई। कैडबरी की चॉकलेट अगर आपने धूप में रख दी, क्या होगा? पिघलेगा ना, खराब थोड़ी ना होगा वो। तो अगर आपने मान लीजिए उसको अगर 8 महीने तक भी सहेज के रखा, तो ठीक है, उसका शेल्फ लाइफ आप लगातार यूज करते जा रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू में कहीं कमी नहीं आएगा। बट व्हेन इट कम्स टू एग्रो प्रोडक्ट्स, अगर आपने टमाटर को 3 दिन से ज्यादा अपने कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा, या सॉरी कोल्ड स्टोरेज में रखने से 3 दिन रह गया अगर आपका, तो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। तो वो जो आपका 2% का जो कमीशन जो आप बोल रहे हैं ना, अगर आपके मेंटोर भी अगर बोलना चाहे तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू लिसन फ्रॉम हिम आल्सो, कि वो जो 2% का कमीशन आप चार्ज करने की बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कमीशन के ऊपर जो आपका कॉस्ट ऑफ जो लॉसेज आएगा, राइट, वो ज्यादा ना आ जाए कहीं पर। दैट इज माय आंसर दिस क्वेश्चन। We have organic farming yes, और who जो wants to answer this? अक्षय। मुझे अक्षय। आंसर करना। हाँ, तो सर इसमें ऐसा है ना, वी आर नॉट ओनली रेवेन्यू मॉडल, हमारा खाली एक कमीशन नहीं है। जब हम लोग ऐप और वेबसाइट लॉन्च करेंगे ना, तो उसमें हम लोग डिफरेंट एडवर्टीज भी देंगे। तो फ्रॉम डियर वन पॉइंट, ये वेबसाइट देखेगा कौन?
सर एक्चुअली जो फार्मर्स के जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, तो वो लोग एडवर्टाइज दे सकते हैं ना हमारे वेबसाइट पे। एक क्वेश्चन सर जो कंज्यूमर्स है, सर यू जो डोंट माइंड। कंज्यूमर्स है, Yes, sir, yes, sir. हाँ, प्लीज कंटिन्यू। कंज्यूमर्स जो है वो पहले तो अपने फोन में ऐप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो जो कंज्यूमर्स है वो सब्जी मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन। मधुरा, मैं उसके लिए बिग बास्केट जाऊंगा। एग्जैक्टली, मेरा खाली मैं एक ही आपके पास क्वेश्चन क्यों है, आऊंगा मैं? एक ही क्वेश्चन है। बात एवरी करते डे हैं सर, वो फार्मर्स से नहीं कलेक्ट कर रहे हैं सर, वो उनका खुद का बना रहे हैं। वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम फार्मर्स। नहीं, they are just rebranding it, Madhura. They are just rebranding it, but ultimately, sorry, शिवम सर, बस मैं एक पॉइंट खत्म कर दूं। They are just rebranding it. मैंने चीनी खरीदा, चीनी को पैकिंग किया, मैंने बिग बास्केट का लेबल लगाया और मैंने बिग बास्केट बांट दिया। आप यही बोल रहे हैं? But in your case also, the same thing will happen, other than the rebranding part. आप rebranding नहीं कर रहे हो, that's okay, but बाकी काम तो सेम टू सेम ही चल रहा है। नहीं सर, हम बाकी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आप बिग बास्केट की बात कर रहे हो, वो सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे काम करते हैं, ठीक सर। और हम जो कर रहे हैं वो सर लोकल फार्मर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। फ्राजो इज द आंसर। फ्राजो जस्ट मुंबई में लॉन्च हुआ है, मैं एवरीडे ऑर्डर करता हूँ। एग्जैक्ट आपका सेम रेवेन्यू मॉडल फॉलो कर रहा है, एग्जैक्ट सेम मॉडल जो आप लोग ने एक्सप्लेन किया। सुनो सर, आई वुड लाइक टू से, तो इसमें क्या खेल है? इसमें बहुत सारे स्टार्टअप है, मुझे पता है, पर इसमें खेल कहाँ पे कि तुम्हारा कस्टमर बेस, मतलब फार्मर्स का बेस कितना बड़ा है। तो उस पे जो अगर हम काम करेंगे, अगर उनको प्रॉफिट मिलेगा बाबा, उनके उसका प्रोडक्ट के लिए उसको प्राइस मिल रहा है, तो फिर वो हमारे पास बिल्कुल आएंगे। तो अगर सब जो हमारे तो हम छोटे एरिया से चालू करें ना सर, तो मतलब छोटे एरिया से चालू किया तो हमारा कॉन्टेक्ट भी उतना ही डीप रहेगा ना फार्मर्स के साथ। नहीं, आप इसमें कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स जायंट बोल से, रहे हो। कॉर्पोरेट जायंट्स के कॉन्टैक्ट्स, उन लोग जो प्राइसेस देंगे उसको मैच करना वेरी डिफिकल्ट, कि उसके लिए अनबिलीवेबल है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगी। नहीं, मैं एक और पॉइंट भी नहीं बोलूंगा। खरीदते हैं सर, वो छोटे छोटे फार्मर से नहीं खरीदते, हम उनको एम कर रहे हैं जो 20 किलो 30 किलो उगाते हैं सर। नहीं भावेश, it's completely fine. I totally respect your point, but one is the major part, and that is the logistic part. You are not mentioning here. वो जो लॉजिस्टिक है ना, जो आप छोटे छोटा फार्मर कहाँ, भावनगर में मिला मेरे को, राइट? मान लेते हैं छोटा फार्मर मुझे भावनगर में मिला। अब भावनगर वाले का पटेटो या टमाटो आप कहाँ तक बेच सकते हो, सोच के देखो। सर हम पुणे ही कवर करा है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ही कवर करा है। चलिए मान लेते हैं डियर, पुणे कवर किया आपने, राइट? आपने पुणे कवर किया। पुणे के अंदर पहली बात तो पुणे सिटी में तो हो नहीं रहा होगा, कुछ भी उग नहीं रहा होगा, वो सराउंडिंग में प्लेस हो रहा है। हाँ, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे में, जहाँ पे फार्मर्स ये उगा रहे हैं सर, वहां से हमारी टीम जाके कलेक्ट करेंगे, उससे वेयर हाउस को लाएंगी, और फिर मथुरा, मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट बोल रहा हूँ। आपकी टीम जाएगी, कलेक्ट करेगी, और स्टेप बाय स्टेप आते वक्त, जैसे शिवम ने बताया कि जैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं, ऑन द वे वी विल ट्राई, क्योंकि सब्जियां वगैरह जो होता है ना सर, जैसे हमने कलेक्ट किया वैसे ही हम ऑन द वे उसको डिलीवर करते जाएंगे, और जितना हम आज नहीं सेल कर पाए उतना हम डिस्ट्रीब्यूट हमारे वेयर हाउस में डाल देंगे सर, ठीक है? और जो आप 2% कमीशन की बात कर रहे हैं ना सर, तो 2% वी आर इन वेरी इंट्रोडक्टरी स्टेज सर। हम तो 1-2 सालों को लॉसेस सहने ही पड़ेंगे सर, क्योंकि अगर हम फार्मर्स को खुश नहीं रखेंगे, उनको हमारे ब्रांडिंग के लिए हमको 2 साल लॉस तो रखना ही पड़ेगा। 2% इज जस्ट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट द फार्मर्स हियर, and having a long term goal, because India we cannot survive without the farmers. हमारा तो फार्मिंग तो 30% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में भी। अगर हम 2017, 18, 19 का देखें, जो जीडीए में, हाँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, अगर हमारा हम इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का परसेंटेज देखेंगे तो वो 17-18 से डायरेक्ट 20% तक जा चुका है सर। अगर हम इसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम फार्मर्स के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज कोई फार्मर्स के बारे में नहीं सोच रहा है सर। नेताजी हो गया, फिर गवर्नमेंट हो गया, दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मर्स। जो छोटे फार्मर्स है तो उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। तो आई थिंक वी हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर देम। Initially, we will bear the losses, no doubt, but for the long term, this will be a mass production and a mass idea. We are also, in our slide, there was a point that we are providing premium services to the farmers, to how to grow organic farming, how to use the advanced technology in their production, how to reduce bad quality products and increase the efficiency of that products, right? So this will take time, no doubt. And initially, there will be problems. We have to face it, and we will have to come over it. So I request all the monks here to invest in our team at least 500 points, and please, I request for that.
Great, great, great. Yeah, Great, round nice, of applause. nicely said, Madhura. Jai Jawan. Jai Jai Kisan. Jawan. Can I add a point? Because I've worked on 2 startups who are doing the same thing that these guys are. And first of all, like it looks so nice in my eyes to see all of you guys. Great. Right. setup that you guys so have much, sir. made. Thank you, sir. Thank you. I was taking a picture of entire team. Thank you, sir. Thank you, It sir. looks really, really nice. And see, what I have seen with the startups that I've worked on, like one is called Farm Phase, another is Fresh to Home. So they do both the same thing. And what happens is that on 2 sides, it's always winning. One is the farmer is always winning because you're going to offer him more profits. He's winning. Customer, he's also winning because he's getting fresh product and you might have to offer it at lower price to get the market. The one who is losing is you and your investor. So it's just the noble idea that you can sell. And I've gone and pitched it to the investors with my folks, and I've told them, see, farmers, like what what Madhura has done, that's what you can sell. That's where you're sold. The noble idea that you're helping the farmers is the only thing that you can put it out, because it's a huge cash burning business. Unless you figure out a way to, like, Vinay sir was right on point. Unless you figure out a way to manage the logistics, manage the storage with some kind of a algorithm wherein you can mix match your demand and supply. I would like to add on to your point that, so we have also thought that how we will reach the small consumers, because in Pune there is so much distance in between, right? So how we will manage that thing? So we have also idea of making a small thela of our company or our venture, something that will provide the that will cover small area, because we have small prices, because there is no middleman. We have small prices, and the consumers will buy from us because we are providing them the vegetables at low prices. If we go to the market, मधुरा पिचिंग बहुत अच्छी की है. लास्ट वाला पॉइंट बोल के मुझे मौका मत दो तुम्हारे पॉइंट काटने का. पिचिंग वो सुपर्ब, बिकॉज़ मैं इसमें फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा. जो आदमी ठेला लेके जाएगा उसका लाइवलीहुड का क्या होएगा? उसको अपना पैसा दोगे? Team 2 is done. Sir, team 2 is done, Vinay sir. Right. So when I was also working with Udaan, and I have seen the entire model of Ninja Cart at Udaan and how Ninja Cart get acquired because of Flipkart and the model, right? So I was into this space and I have seen the real problem. मैं warehouse में जाके इनफैक्ट एक दिन बैठा भी था कि क्या होता है वहां पे ड्राइवर बैठ के कंपनी के गाजर खाता रहता है, राइट? सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं. मतलब देखने को ये बहुत फैंसी दिखता है. I was like कि भाई तू गाजर क्यों खा रहा है? सारे बोलते हैं भूख लग रही है. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं टू ट्रैक एंड बिल्ड इट आउट, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्पेस में ये कि पेरिशेबल गुड्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो ये सबसे बड़ा इशू है इस चीज पे. सेकंड इज कि फार्मर्स को, मतलब यू जेन्युइनली सोचो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी फार्मर्स एंड ब्रिंग इट एट वन प्लेस. मतलब उसमें बहुत बड़ा इशू है, राइट? एंड हेंस इसमें है ना बहुत सारे एजेंट्स इन्वॉल्व है. इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी आइडिया आया था कि व्हाई कांट वी ओपन आवर समथिंग कॉल्ड एज मंडी एंड समथिंग सॉर्ट ऑफ. I tried it. I went to the places out. I felt like कि नहीं भाई, it's a game of a volume and it's a game of margins. तो ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज 100 में खरीदते हो ना, तो आप देखना कभी भी हर एक आपके एरिया में देखना, होलसेल मार्केट में वही आलू 50 रुपए का मिलता है, बाहर आके वही आलू 80 रुपए का मिलता है, और घर के पास वाले ठेले में वही आलू 100 का मिलता है. मतलब अलग अलग वेराइटी, अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग रेट. मतलब वही मंडी में आलू 50 रुपए का और वही मंडी में आलू 100 रुपए का बाहर एट अ सेम सिटी. मतलब अगेन दैट इज देयर. सो ग्रेट यार, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरी टीम्स यार. काफी अच्छे प्रेजेंटेशंस थे. आई नो लॉट ऑफ डिस्कशंस आते हैं, बट ठीक है यार, डिस्कशंस तो चलते रहेंगे. सो आई हैव स्मॉल सरप्राइज यार. हमारे इवेंट और सरप्राइज ना हो ऐसा तो कभी होता नहीं है, राइट? तो हमारे साथ मत देना, नहीं, रुको. हमारे साथ एक और मेंटर कनेक्टेड थे जो आप सबके पिचेस सुन रहे थे, छुप के वो सुन रहे थे. बात वही है बस. तो उनको स्पेशल 1000 पॉइंट्स है, वो 3 या 4 जो भी जितने भी टीम्स को वो देना चाहे पॉइंट्स, तो वो टीम्स को पॉइंट्स दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम हर्ष. यार कहाँ पे हो आप? छुप के बैठे हैं. जोरदार तालियों से हर्ष का स्वागत करते हैं. हर्ष भाई कहाँ हो? नहीं, आप सबके फेवरेट मेंटर हो यार. वो रहता है ना आजकल, ब्लू टिक आता है ना इंस्टाग्राम में और उसमें ट्विटर पे. आप हमारे वो ब्लू टिक वाले मेंटर हो. यस. So great यार. Harsh, you can share your feedbacks and I'll also come to the scorecard यार. मैं एक बार scorecard पे भी आ जाता हूँ.
So Harsh के पास 1,000 points है. He can allocate 1,000 points if you want to give a feedback and then share the points out. That is also fine. I want mentors to also be ready with their scorecard and points, how much points they are going to be sharing to each team. So yes, Harsh. नहीं यार मतलब honestly this is a good place to be, good way to spend your Friday night. मतलब हर रोज I used to see Shark Tank and this is a real life Shark Tank, so this is amazing to see. Honestly, all 4 pitches amazing. There are things that everybody can improve on always, वो हमेशा रहता है, but to do something in I don't know maybe 4 or 5 days to go from 0 to this much, it's amazing, like amazing work. So kudos to you guys. What I would definitely like to say is people have worked on very large problem statements, जैसे the people working on Kisan as well as the people working on Matrix. Both of those pitches, amazing problem statements. पूरी दुनिया solve करने का try कर रही है. If you are able to solve, hats off. For sure. The problem that was being solved by, for example, the people with the belt. I would say amazing pitch. बस आप ये भूल गए कि आपको product pitch करना था. तो उसमें थोड़ा बहुत आप पीछे रह गए. Otherwise, it was an amazing pitch, honestly. And then I honestly want to say like all 4 pitches amazing. के लिए kudos. I will reserve my 1,000 points and divide it across 2 teams. मैं 4 को करना चाहता था, but then I was told not to do participation certificate sort of a thing. So इसलिए मैं I'll choose 2 teams, which is the 2 teams, the first and the last presentation, unsurprisingly. But the first presentation on Matrix, very well thought out. Very well understood as well, and the last presentation on Kisan. I mean, I would have to credit Madhura for a single statement turnaround of the entire pitch, because uske baad everybody was on the positive side of things. So congratulations, guys. 500 points to each of them. So thank you so much. Great. So great, yeah. Good to hear that out. I think last team was team 2, right? And the first was, I think, which team? Team 4, right? If I'm not wrong. Sorry, team 3. Okay. Yes. So great, यार. Team 3 और team 2 काफी tough throat competition दे रहे हैं. No issues. अभी भी कल का game then बचा हुआ है game change करने को. We'll move to our mentor for team 1. I want you to share your scores and मतलब आप ऊपर का ही स्कोर यूज कर सकते हैं. अब तो नीचे का नहीं यार. मतलब आप like I'll be using the end score. No, I want you to use this the upper score. Yes, sir. Lejal, sir. You can, yeah. I go first or can I go last? Oh my God. नहीं यार, मतलब it's fine. मतलब you can start with. कहाँ फंसा दिया भाई? You have 1,000 points to invest. So is it necessary that I have to exhaust? No. Minimum 200, maximum 1,000. Okay, I have to spend minimum 200. Yeah, minimum 200. Okay. So my team would say that I've taken a lot of points. You know, it's their money and it's investing strategy. Yeah. They've told me, like, you know, you have to be bootstrapped with your money also, like, you know, you're not giving you a lot of money. See, I think I've liked all the pitches. Like, anyway, I cannot invest in team 1, so that's something that's there. So I have to choose between that. But then I'm a bit confused on what was what ideas, what kind of a doubt is there in my head. So I wanted to congratulate all of you for the efforts, because it's, you know, like rightly pointed out by Harsh, you know, how can you make all of this happen in, like, you know, we take, you know, I work on startups and we take months to finish all of this, and you guys have done it in 4 days. Incredible. And I'm really, really happy and glad to see a lot of interest in entrepreneurship from the CA field. I think big congratulations to Shivam sir for CA Monk, and, you know, all of you guys for actively participating in it. And my investment, I think I wanted to choose 2 teams for the investment. So I think I wanted to go with
I really liked all of them. But I'm like I said, my expertise and then the product concept on the healthcare one was a bit off of my head. So I wanted to give money to, of course, the EV being like one of my favorite segment. And of course, Kisan to noble hai, so humko, it has to be there in our portfolio. So I will put some money there as well. So probably I'll use the minimum fund that is available. Probably I can give like uh, around 250 coins to the initial metrics idea, and then probably another 200 points to uh, our our Kisan after all. Okay, okay. So you're devoting 200 points to team 2, and the matrix one is, I think, team 3, right? Yes, sir. Yes. Matrix Okay. is team 3. Okay, great. So I can I think see. I'll give the metrics 250. So just to say that I'm interested in EV, and this is the noble part of my idea. Okay, okay. Great, great, great. We'll move to Chetan. I think, yes. Yeah. Yeah. So I also like the EV idea. So I would be giving 200 points to team 3 for the EV idea. Okay. And secondly, team 1. Okay. I would be giving 100 points. Okay. Great. Great. That's Great. it. Yeah. Okay. Great. We'll move to Shivam. Firstly, great presentation, all 4 teams. Vinay sir, आपको points देने, but ultimately business तो business होता है. जैसे Shark Tank पे बोलते हैं, जो product समझ में नहीं आया बिल्कुल भी. So I'll definitely go with Kisan. Okay. So Kisan, I'll give 200, and the first team, I'll give them 150 points as well. Okay, great. यार 100 का वादा किया था यार विनय सर को, ऐसा मत करो यार. ये गलत हो रहा है. ये तो स्कोर कार्ड बिगड़ रहा है मेरा. मुझे लगा 100 तो आपसे पक्का मिलेगा. अरे ओके चलो. ये क्या, ये नहीं बोलना था. ठीक है चलो. ओके. प्रोडक्ट नहीं समझ में आया. Okay, okay, got it, got it. Yes, yes, we'll move to Vinay sir. Yes. Sir, actually जो यूनिक आइडिया नॉर्मली स्टार्ट, जब यूनिक आइडिया होता है तो नॉर्मली स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता. सो इट्स ओके, बट वेरी वेल डन ईच एंड एवरी टीम. नाउ व्हेन इट कम्स टू टीम 1 आब्राकाडाब्रा, मुझे थोड़ा सा जो मार्केट सेगमेंट है वो थोड़ा सही नहीं लगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पॉइंट, राइट. बट मधुरा अगेन, वो जो एक पाकिस्तानी ने बोला था ना कि जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए. वो जो लास्ट वाला जो सेगमेंट था जो आपका, जैसे वो प्यार का पंचनामा में मारा था ना लास्ट वाला, वैसा आपने चेंज कर दी सिचुएशन को. सो आई वुड डेफिनेटली गिव 200 पॉइंट्स टू यू, राइट, टू मधुरा एंड शिवम. लाइक जो किसान वाला टीम था उसको. सन ऑफ पिक्चर्स, डेफिनेटली ईवी बहुत अच्छा सेगमेंट है, फ्यूचरिस्टिक है, बट मुझे थोड़ा सा जो चार्जिंग वाला पॉइंट था वो मुझे थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग लगा मेरे लिए. तो आई विल गिव यू 150 पॉइंट्स फॉर इट. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. सो यहाँ पे बचते हैं -350. तो बच जाए. चलो ग्रेट. सो टीम 3 अभी टॉप पे है. सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम 3. एंड टीम 4 सबसे पीछे है. कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है गेम पलटने का. अभी अपना टाइम बाकी है, राइट. सो ग्रेट. सो अब आए हैं सभी लोग, तो यार ग्रुप फोटो तो जरूर बनेगा, राइट. एंड फिर से यार एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज सभी मेंटर्स के लिए तो बनना ही चाहिए यार. जोरदार तालियों के साथ स्वागत का धन्यवाद करते हैं, राइट. बिकॉज आई थिंक कितने बज गए, आई थिंक इट्स मोर देन 11, राइट. सो इतनी रात तक बैठना अगेन, दैट इज अ बिग पार्ट. इनफैक्ट आप सीएमओ के साथ जुड़ जाओ सर, ये नॉर्मल शेड्यूल हो जाएगा विच आई से. सो दैट इज दैट. यार आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टर्न ऑन देयर वीडियोस. इट वुड बी ग्रेट टू हैव अ कूल ग्रुप फोटो. फटाफट सबसे रिक्वेस्ट है. And I'll also request mentors to please share their address. We have a special gift for you guys coming at your home. So जो भी team leaders हैं, जो भी connect हुए हैं, I'll request कि यार उनके address please collect करके मुझे दे देना, so that I can share the gift with them. और जो अभी भी छुप के बैठे हैं यार, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लो.
Monks are really amazing. Great, great, great. ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ वन सभी को पता है हमें चपाती बोलते हैं, राइट? ये हमारा पेटेंट डायलॉग है. आई थिंक मेंटर्स आर जॉइनिंग अस फॉर फर्स्ट टाइम, तो उन्हें नहीं पता होगा. तो हमारे इसमें हमने पेटेंट डायलॉग बनाया है, जब हम वन बोलते हैं तो सबको चपाती बोलना होता है जोर से. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज अनम्यूट देमसेल्व्स, और फिर काउंट ऑफ वन पे हम जोर से चपाती बोलेंगे. चपाती. अरे नहीं रुको अभी. रुको जरा, सब्र करो. सबर करो. He has not had a dinner. धक्का मुक्की नहीं. ठीक है, 3, 2, 1 चपाती. ग्रेट यार, काफी इनोवेटिव चीजें, काफी एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ बिजनेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स केम आउट. मतलब आई डोंट नो कि आपने कैसे किया है यार 2-3 दिनों में. मेरे साइड से बहुत ज्यादा प्रेशर था आप पे, तो यार सभी के लिए यार जोरदार तालियां तो बनती है. मतलब बहुत दम लगता है यार ये सब चीजें करना, बैठना और डेडिकेशन देना. आई हर्ड कि लोग 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंग्स ही कर रहे हैं. मैं ग्रुप पे देख रहा हूँ, लिंक आ रही है, भाई ज्वाइन कर ले, 40 मिनट खत्म हो गए. आई वाज लाइक भाई. ओके, बट अगेन दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस व्हिच टीच, यू नो. बहुत ज्यादा पैसा कमाया. हाँ, यस. तो अगेन इट्स अ प्रोसेस यार. मतलब जर्नी तो ठीक है, आप कौन जीतेगा कौन हारेगा वो रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे, बट ये जो प्रोसेस इंसान को बनाती है ना, वही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं भी जब स्टार्ट किया था कोई भी वेंचर, इफ एनीवन स्टार्टेड आउट, तो ये जो प्रोसेस सिखाती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पैसा गया उसमें कोई गम नहीं है ना. इन्वेस्टमेंट सही हुआ गलत हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो प्रोसेस से इंसान आदमी बन जाता है ना, इतनी मार खा खा के और ठोकर खा खा के, वो चीजें सिखाती है. ऑल्दो काफी सबके आइडियाज में आई वांटेड टू ऐड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स कि ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है और ये चीज क्यों नहीं हो रहा है. मतलब लॉट ऑफ थिंग्स यार हमें भी लगता है कि हम कर देते हैं या करना चाहिए, बट जेन्युइनली अब व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग ना, कि ये क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये पॉसिबल किस हद तक होगा and how big is the market size and how you're going to be doing that out. But great यार, lot of innovative ideas, lot of good things out. अब कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर अब जीडी लेना है कि नहीं लेना है. अब मैं तो रेडी हूँ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. करो सर. सर स्कोर कार्ड में टीम 1 में 450 होने चाहिए रिड्यूस. टीम 1 में 450 रिड्यूस होने चाहिए. हाँ, मैं वो एक बार तो वो प्रूफ रीड करेंगे, डोंट वरी, है ना. देखो टीम 3 ये कंपटीशन है ये. हाँ, अभी भी स्कोर कार्ड लेके बैठी है. अभी भी स्कोर कार्ड का ऑडिट चल रहा है. ये क्या हो गया? राइट, नहीं चलो ठीक है यार, आई लाइक द स्पिरिट. सो जीडी करवा दो, वो गेम चेंजर है हमारी टीम के लिए भी. अरे तुम रहने दो सर, हम पे तो सर आपने बड़ा जीडी करवा दो हम तो बात नहीं करेंगे. हाँ सर यार, आपने लगा दिया है. yes. So I think some mentors are saying something. Yes. Yeah, Shivam sir, can we leave? Like yes. Thank you यार, thanks यार, thanks everyone for joining in. काफी अच्छा लगा यार आप आए, and will again be troubling you for a lot of our events. I hope you enjoyed this. Very interesting session. Now, congratulations to all of you. And all the very best. Have fun. Yes. I'm pretty sure you guys are having fun. So just enjoy the process. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Thank sir. you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. हर्ष सर बताएंगे अभी कि जीडी लेना है कि नहीं. मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो मैं रात को 2-2 बजे तक. पार्टिसिपेंट्स रेडी है. पार्टिसिपेंट्स रेडी है. सर करवा दो प्लीज. सर करवा दो सर. हाँ, करवा दो. रातों की नींद मत हराम नहीं सर, सबकी टीम रेडी नहीं है सर. हाँ, नहीं सर, अब तो जरूर करवाइए. अब तो जरूर करवाइए. अब तो जीडी होना ही चाहिए. जो रेडी नहीं हो उसको डिस्क्वालीफाई कर देना. हाँ सर, एकदम सही बोले. जो हमसे जले साइड में होके चले. चलो एक सेकंड. आई थिंक हर्ष सर वांट्स टू ऐड ऑन समथिंग. I mean नहीं यार, आई थिंक इट्स मोर देन 11:30, बट ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट कल या परसों प्लान करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा. अच्छा सर, एक्सटेम्पोर करा दो, एक तो करा दो. कुछ तो कराओ सर. कुछ तो कैसे भी पॉइंट्स लेके जाएगी. सो जाओ चलो. हमें नींद नहीं आएगी. सर प्लीज करवाओ. ठीक है, मैं और हर्ष सर एक टीम से नॉमिनेट करेंगे रैंडमली. ठीक है, डन. एंड वी आर गोना बी कॉलिंग देम फॉर एक्सटेम्पोर. ठीक है, तो हर्ष मैं बता देता हूँ क्या करना है अपने को. आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ आपको गाइड करूंगा. सो व्हाट यू आर गोना बी डूइंग, आपके स्क्रीन पे टीम नंबर्स दिख रहे हैं लोगों के. यू आर गोना बी पिकिंग 2 people रैंडमली फ्रॉम देयर टीम्स, एंड आप उनको कोई भी टॉपिक दे सकते हो. उनको 1 मिनट तक बोलना है उस टॉपिक पे. ठीक है, जिस भी टॉपिक में सबसे ज्यादा आपको फनी लगेगा, ठीक है, वो टीम्स को आपको पॉइंट्स देना है सबसे ज्यादा.
ठीक है, ये कब हो गया? हम गेम और रूल दोनों चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कल से यही चल रहा है, कल से यही चल रहा है, एंड मोमेंट पे मतलब चेंजेस। सर हमने जो इंट्रा मीटिंग की उसकी तो कोई वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, कल वो से यही बॉन्डिंग चल था, रहा है। वो बॉन्डिंग था। बॉन्डिंग हम ऐसे ही बना सकते हैं, कल से आप गेम Right. चेंज कर रहे हैं। सर प्लेयर बचाने के लिए पॉइंट्स लुटा दिए हमने तो हमारे। सर हमारे पॉइंट्स ही गए उसी पे, और आप तो देखो सर। तो हर्ष, आपको जिस भी टीम का सबसे अच्छा एक्सटेम्पोर लगेगा, फर्स्ट टीम को आप 500 पॉइंट्स दोगे, सेकंड टीम को आप 250 पॉइंट्स दोगे, ठीक है। हर एक टीम से एक एक प्लेयर हमको हम बुलाएंगे, आप बुलाओगे, आप रैंडमली किसी को भी चूज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इज डन, व्हाट वी आर गोना बी डूइंग इज दैट वो पर्सन आके एक्सटेम्पोर करेगा, टॉपिक आप देना फनी सा है जो भी है, और उसको जितना फनी बनाएगा उतने आप उसको डिसाइड करोगे कि कौन विनर है, ठीक है। Done, Yes. done, done. चलो ग्रेट। फोर डिफरेंट टॉपिक्स तो ताकि सबके लिए एक्चुअली एक्सटेंडर रहे। राइट राइट राइट, चलो ग्रेट। देखो ये अनस्क्रिप्टेड है, अनप्लान्ड है, Sir, मेरे is को it अनप्लान्ड। compulsory to speak in English? नो नो, हिंदी में जो भी चलेगा। हाँ नहीं, just to clarify. नहीं नहीं, बोथ द लैंग्वेजेस आर फाइन, हमें दोनों लैंग्वेजेस आती है, राइट। हमें क्या, अरे हर्षी हर्षी यार तो मेंटर, सो दैट इज दैट यार। कोई लोग सर पकड़ लिए, ये क्या हो रहा है यार। मुझे पता है, मुझे है ना एकदम अनसर्टन चीजें बहुत पसंद है, मतलब सोचा कर लिया बहुत पसंद है मुझे, इसलिए सर को रिस्क मैनेजमेंट पसंद है, अनसर्टेनिटी वर्सेस रिस्क। राइट। तो मुझे ये चीजें बहुत पसंद है, एंड दैट इज व्हाट आई लव टू डू। बट ठीक है सर, आप ये रियलाइज करो, आपने जैसे बोला वी आर डूइंग एक्सटेम्पोर, लोगों ने नाम चेंज कर दिया, टीम निकाल दिया अपने ठीक, अरे टेंशन मत लो, मेरे पास है ना, मेरे पास है सब। आई हैव एवरीथिंग। आप बंदे का नाम बोलो, मैं टीम बता दूंगा। ठीक है। Shivam sir, may I leave? May I also leave? Yes यार, yes yes. Okay, thank you guys. Thanks for inviting me, and I hope you all enjoyed, and I really enjoyed a lot. And thanks a lot to Shivam sir for making me a part of this great pitch, CA Monk Tank, and I hope everybody will do like good in their journey, and we hope कि दोबारा ऐसा कुछ इवेंट होगा तो विल बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ। Sir, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, You sir. are like, Until you are like founder of Bharat Pay. Oh. And team 4, I'm really sorry, like we didn't make it happen, but next time Sir, definitely. it's the process that matters. Result तो ठीक है। Thank you guys. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you Bye, sir. sir. Bye, sir. Thanks, sir. Thank you. Bye, sir. Yes. So yes, Harsh, आप नाम देख लिए, which team you are looking for, which team you can start with. So I am telling the name of 4 people who are going to begin. Okay, suspense ही पहले खत्म कर दिया, ठीक है। One is Minky Mittal. Okay. You are on the line. Then you will have Anandeep Gautam from team 2. Team 3 say I am a bit confused, but I'm going for Arun Jose. I hope I am pronouncing the name right. And team 4, we'll go for Sakshi Gupta. If all 4 of you can just raise your hand, would be helpful. Yeah. Team 2 से कौन था? Team 2 से कौन था? Anandeep Gautam. भास्कर, भावेश, माधुरी, आप लोग अपना हैंड नीचे कर प्लीज, बाकी लोग प्लीज Team 2 अपने वाले अपना हैंड नीचे कर लीजिए, आनंदीप अपना हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। आनंदीप लाइक इसी दिन का तो इंतजार था मुझे, बिडू। आनंदीप एकदम चिल, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, एकदम बिंदास बोल। आनंदीप पूरा फनी होना चाहिए, जैसे हमने टीम में किया था फनी गेम, पूरा वैसा। उनको सही गलत I think साक्षी just a second साक्षी गुप्ता प्लीज हैंड रेज कर दो। साक्षी गुप्ता जहाँ कहीं भी हो, मंडप पे आने का कष्ट करें। छोड़ दिया है, छोड़ के चली गई, ये क्या हुआ? देखो माइनस पॉइंट्स मिल जाएंगे टीम 4 को। प्लीज ऐसा मत करो यार। मैं सही अरे यार ऐसा क्यों थोड़ी होता है यार, कोई नॉमिनेट करने का थोड़ी छोड़ता है यार, पर ठीक है। हर्ष आप किसी और को नॉमिनेट कर दो। हेलो सर। अच्छा है ग्रेट। क्या टॉपिक क्या है? टॉपिक नहीं है, हैंड रेस कर दो बस अभी, वर्चुअल हैंड